Am I audible? Hello. हाँ हाँ. ठीक है क्लियर है Nice. वने ज्यादा ठीक वने ना नजदीक या वन ज्यादा असल ठीक ओतान थोड़ा लुत. चलो ठीक है ओके. करल हेलो
प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं और विज्ञान संचारकों को उनकी पिछले साल की उपलब्धियों और योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का अवसर है। समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यही रामन प्रभाव का सिद्धांत पूरी दुनिया में अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार बना। इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीएसटी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंस्पायर का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान,
प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का अवसर है। समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यही रामन प्रभाव का सिद्धांत पूरी दुनिया में अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार बना। इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं और विज्ञान संचारकों को उनकी पिछले साल की उपलब्धियों और योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अवसर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह DST के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंस्पायर का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग AI रेडिनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का अवसर है। समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यही रामन प्रभाव का सिद्धांत पूरी दुनिया में अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार बना। इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं और विज्ञान संचारकों को उनकी पिछले साल की उपलब्धियों और योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अवसर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह
डीएसटी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंस्पायर का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का। अवसर है विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का। अवसर है समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, सुप्रभात देवी और सज्जनों। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के समापन और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पावन अवसर पर मैं मानवर्धन कंठ आप सभी गणमान्यों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उत्सव मनाया जाता है। 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी को सर सीवी रामन ने प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी अपनी खोज की घोषणा की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना है, साथ ही जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत अभिगम। नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न सर सीवी रामन का पुण्य स्मरण करते हुए मंचासीन सभी गणमान्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन जी। हमारे बीच
उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी, CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन जी और ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी। आप सबसे निवेदन है कि ऐसी ही तालियों की अनुगूंज हॉल में बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियां सभी माननीय गणमान्यों के लिए। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक मांगलिक कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। मैं सभी गणमान्यों से सविनय निवेदन करूंगा कि दीप की इस रीति को आदर देते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, क्योंकि माननीय मंत्री जी थोड़ा विलंब से हम सबके बीच पधारेंगे, लेकिन उनका आशीष सदैव हमारे साथ रहा है और उनकी अनुमति से ही हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। माननीय गणमान्य, आप सबसे निवेदन है मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। आप सभी गणमान्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के प्रमुख और सलाहकार डॉक्टर प्रवीण अरोरा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत कर हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण अरोरा जी, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। So, Namaskar and very good morning. Honorable Minister of Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, Dr. K. Vijay Raghavan ji, Principal Scientific Advisor to Government of India, Dr. Shrivari Chandrasekhar ji, Secretary DST, Dr. Shekhar Mande ji, Secretary DSIR and DG CSIR, Dr. M. Ravichandran ji, Secretary Ministry of Earth Sciences, Dr. Balram Bhargava ji, Secretary Department of Health Research, Dr. Anurag Agarwal ji, National Science Day Speaker and Director IGIB, my learned colleagues from DST, DBT, Earth Sciences, DSIR, CSIR, Office of Principal Scientific Advisor, Vigyan Prasar. The central attraction of this event, awardees of NSD and their families, media persons, ladies and gentlemen. I really feel honored and privileged to get an opportunity to welcome you all on National Science Day 2022. This is indeed a tribute to the legendary Professor C.V. Raman, a champion of Indian scientific excellence. We celebrate the day with a theme dedicated to the nation, integrated approach in S&T for sustainable future. Government of India designated 28th February as National Science Day in 1986. On this day, Sir C.V. Raman announced the discovery of the Raman effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1930. To commemorate this historic and memorable day, theme-based science communication activities are also carried out all over the country. It's indeed a proud and a unique moment
For us, as National Science Day this year also marks the culmination of National Science Week on the theme Vigyan Sarvatra Pujyate, that is, science is revered everywhere. I would also like to take this opportunity to congratulate you all on this historic first-time observance of Azadi Ka Amrit Mahotsav by the nation. On this occasion, we recall the immortal heroes of science who united us and helped us become worldwide connected and renowned in the field of science. This, in turn, immensely enhanced the spirit of our independence movement and instilled a sense of self-reliance and self-sufficiency. I extend my warm greetings to you all. I am delighted on continuation of this memorable legacy since 1987, when NCSTC DST conceptualized and initiated the celebrations of the NSD function. The mandate of the NCSTC DST has aided us in achieving the goal of instilling a scientific temper among the masses as enshrined in the Indian Constitution. In fact, NCSTC DST builds on the tradition by establishing creative and cross-disciplinary processes, mechanisms, field models, platforms, and research efforts in science communication and popularization since then. I am indebted to Honorable Minister, Sir, and express my sincere thanks for his acceptance to grace this function today and confer the awards upon the selected awardees. I am sure the NSD theme dedicated to the nation by your kind self and your message today shall go a long way to raise public awareness, understanding, and scientific thinking for India to become future-ready and sustainable with integrated approach and applications of science and technology. Integration in S&T approach will also impart Gati Shakti in enhancing and sustaining the high growth of the economy, crucial for making India Atmanirbhar over the long run. It is our immense pleasure today to have with us Dr. Anurag Agarwal, the National Science Day speaker, on the NSD theme, Integrated Approach in S&T for Sustainable Future. We look forward to you, sir, for significant insights from your address towards sustainable future and benefits to the country. My sincere gratitude is also due to our Secretary, Dr. S. Chandrasekhar, sir, known for his scientific excellence and dedication to the cause of science. We are celebrating the event under his profound guidance, vision, and leadership, encouragement, and a stimulating environment. I would like to congratulate here all the awardees and extend a warm welcome to them from the core of my heart. I would also take the opportunity to welcome other esteemed guests who have come here despite their busy schedule. I'm equally thankful to varied stakeholders from different parts of the country for being with us for this historic event. I'm delighted to have my colleague from Vigyan Prasar, Dr. Nakul Parashar, Director of Vigyan Prasar, and his team joining us with their excellent cooperation and support. And that's how we are here. We are enthused and able to celebrate this mega event. Happy Science Day. Thank you, one and all. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण अरोरा जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में देश की समृद्ध विरासत को सहेजने का। इस वैज्ञानिक विरासत को समादर देने के लिए अब मैं निवेदन करता हूं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी से कि वे अपने मूल्यवान विचारों से हम सबको कृतार्थ करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Greetings to all of you on our festival. Also, I would like to greet all the friends who are joining live with us today and celebrating this festival of us.
I also would like to welcome our minister who will be joining us very soon. Greetings to all the friends on the dais. Greetings to Principal Scientific Advisor. It's a proud moment for all of us to be part of this important event while we are celebrating India's Science Day. Science, technology, and innovation are essential pillars, and we are proud that we are part of these pillars. Now, at this momentous 75th year, it's the time not only to do a introspection, but also how we are going to plan our future. And this 1 week has given us ample time to debate among all of us to see what is the future of Indian science and technology and how we are going to march towards the 100th year. We know the trajectory of Indian science has been outstanding, and in the last several years, our global rankings have gone up, including in the publications, in patents, in commercialization, number of unicorn companies, and all this has been because of the science and technology interventions. Our government has a goal to further accelerate the pace of discovery, diffusion, and delivery of science-led solutions. The theme for National Science Day 22, as we all know, has been chosen as integrated approach in science and technology for sustainable future. While we are looking for a sustainable future, I think this integrated approach of taking all of us and travel together as one team make this happen. The theme is going to guide us to meet several global and national challenges with this spirit. Ministry of Science and Technology and Earth Sciences cover a very large canvas of R&D from deep ocean to mysteries of universe. Our range encompasses grassroots innovations to top class of scientists. Our activities impact right from a farmer in a remote corner of the country to sophisticated industries such as space. In order to cater such a large canvas of stakeholders, we need to make adequate and sustained investments in scientific research, innovation, and technology development and their effective outreach, which we are doing effectively. This shall build strong comparative advantages which can be leveraged to focus on sectors such as health sector, business, professional services, agriculture, and other things. Science technology has a critical role to play in creating a roadmap to Atmanirbhar Bharat, which is ready for a sustainable future. India as a nation had to rise above the recent unprecedented crisis caused by the pandemic. While the war in the European part is really troubling all of us, hopefully we overcome a man-created pandemic very soon. Development and deployment of indigenous vaccines for COVID has been a hallmark of Indian science and technology contributions. To realize the dream of a sustainable and inclusive growth, it's imperative to make sustained efforts in science popularization, which Vigyan Prasar has been doing very, very effectively. I also congratulate all the winners of various competitions our ministry has been doing. Empowering youth is one important activity our ministry is doing, and I'm glad that many youth are participating in this important event. For our sustainable future, all scientific ministries must work together to instill, nurture, and unleash the scientific temper. Our Honorable Minister has been spearheading the unity of all the science secretaries to make sure that we all work what we want to achieve. This will be a true testament to our dedication to Sir C.V. Raman's spirit of scientific temperament he has inculcated in all of us. This reinforces Vigyan's status as Sarvatra Pujate. Once again, I invite all of you for this celebration. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक अवसर है भारतीय वैज्ञानिकों की उन उपलब्धियों को स्मरण करने का जिन्होंने विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया। आदरणीय डॉक्टर शेखर मांडी जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आकर अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करूंगा। धन्यवाद मान्यवर्धन जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर विजय राघवन जी, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। मंचासीन मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के।
डॉक्टर अनुराग अग्रवाल आज के मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के, और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर। जैसे कि हम लोग हर साल विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, आपको बताया गया कि इसको सीवी रमन की जो एक नई खोज थी, उन्होंने इसी दिन 1928 में इसकी घोषणा की थी अपनी खोज के बारे में, और इसे हम लोग आजकल सीवी रामन इफेक्ट करके इसे जानते हैं। मुझे कहानी याद आ रही है 1930 की, जब सीवी रामन साहब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक समारोह गए थे, और उस वक्त किसी ने आके सीवी रमन साहब के कान में कहा कि आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके एक दोस्त है प्रमुख जो भारत में है, उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं भेजी है, और इंसिडेंटली आजकल आपके दोस्त हमारे जेल में हैं। और उस वक्त सीवी रमन साहब को याद आया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा जहाँ बैठे हुए थे इस समारोह में, कि उनके पीछे में ब्रिटेन का यूनियन जैक लगा था, भारत का तिरंगा नहीं लगा था। और उस वक्त सीवी रमन अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। ये कहानी मुझे इसलिए याद आ रही है कि जो कि आज हम 75 वर्ष मना रहे हैं हमारे आज़ादी के, हम लोग कई अक्सर बार भूल जाते हैं कि आज़ादी के संग्राम में वैज्ञानिकों की भी एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है। और काफ़ी सारे वैज्ञानिक जो थे आज़ाद के पूर्व, उन्होंने आज़ाद के संग्राम में बहुत सक्रिय भाग लिया था। हमारे प्रमुख वैज्ञानिक जो है उस काल के, उन्होंने आज़ादी के संग्राम में बहुत सक्रियता से भाग लिया था। और ये भी हम लोग इसलिए मानते हैं कि वैज्ञानिकों की भी एक बहुत अच्छी भूमिका रही है हमारे संग्राम में। और जैसे कि मेरे सहभागी डॉक्टर चंद्रशेखर ने आपने बताया कि पिछले 75 वर्षों में हमने जो भारत की प्रगति देखी है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिक अनुसंधान की एक बहुत प्रमुख और अहम भूमिका रह चुकी है। और आज लोग हम जो कि यहाँ पर है, और आने वाले भविष्यकाल की ओर हम लोग जब देखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की एक बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। और इसलिए इस वर्ष की जो थीम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको चुना गया था कि इस वर्ष हम लोग साइंस डे को इस थीम के भीतर इसको मनाएंगे। आप सभी को पुनः विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए लोग, मैं मानता हूँ कि जो वेब पे भी जुड़े हुए युवा वैज्ञानिक हैं, उनसे भी आह्वान करते हुए कि आने वाले समय के लिए हम लोग को जो तैयार होना चाहिए, उसमें विज्ञान और अनुसंधान से जुड़कर हम आने वाली समस्याओं को भी हल करने में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आदरणीय डॉक्टर शेखर सी मांडे जी। अब मैं आग्रह करता हूं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन जी से कि इस पुनीत अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Honorable Minister Dr. Jitendra Singh Ji, Principal Scientific Advisor Professor Vijay Raghavan, DGCS A.R. Sekhar Mande, DST Secretary Dr. Chandrasekhar, DG ICMR Dr. Balram Bhargava, Professor Anurag Agarwal, colleagues and friends from various ministries, media, very good morning to all of you. It is indeed today we have joined together for two programs. Of course, one is National Science Day we are celebrating, and the second one is, of course, Vigyan, actually Sarvatra Pujyate. These are the two things amalgamated today. The first one, when we talk about National Science Day, the theme is, as everybody mentioned, it is integrating science and technology for sustainable future. I think it is very imperative we need to have the science has to be amalgamated, all the science discipline has to be work together. It is interdisciplinary is very important. That's what is stressing this particular year's theme.
As you all know that initially science started with the science, then technology, then later on engineering, then mathematics. STEM importance has been stressed, and later on now it has been also started. Arts also very important for the creativity. So STEM becomes STEAM, and also now medicine also important. Then it has become STEM, very strong STEAM. That means double M has been used. I think this shows that the science is not one particular discipline or one area. We need to have an integrated way we have to do it. Considering this aspect, the Government of India has started now one of our aspect, that is a deep ocean mission. I think this mission is not only for earth science. I think this is a collaborative mission for integrating all the science ministries, ISRO, DST, DRDO, DAE, CSIR and DBT, all joined together. We are going to harness the oceans in sustainable way for the future. So this is a unique year for when we start this integrating science and technology for a sustainable future. So this program is very unique in that aspect. I think we need to provoke our young minds to think differently than what we are usually thinking, especially in harnessing the Mother Earth, including the ocean and other things in sustainable way. And also we have to stress upon the interdisciplinary science and technology for the future. I think from school and colleges, we need to focus on themes rather than branches of science. Instead of looking at physics, chemistry, or biology, I think it is important to explore the world around them by looking at energy and forces, materials, and living things, as well as environmental awareness and care. I think that is a direction we need to work on it. Coming back to Vigyan Sarvatra Pujyate is a major success in the last 1 week. We are able to communicate science and propagate science to all the community, especially students and other people. I think it is not enough. This 1 week is not enough. We have to constantly, we have to provoke the science to the younger community. And also mostly we are able to propagate science and technology to the city. I think we need to go for much more to the villages where more ideas can be generated. We need to have more ideas from youngsters. For that, we need to have a local language to be the important. There are many books, of course, science books are not available in the local language. I think we have to utilize maybe our senior scientists, maybe those who have retired or professors. We can use their services to translate the science to basic, simple language, so that can be used for the villages and other people to provoke more and more science thinking process. And also we have now started with the 17 books, 17-day, 75 years celebration. This 75 years of books and other things, I think we need to translate to maybe the local language, and we have to motivate. And each center has to go for at least 75 villages so that they can teach some of the science, thinking in science process, so that we can bring more and more people in this science stream. I think by 2047, we should not celebrate only this particular day as a National Science Foundation Day, that is 28th February, but also many other days we need to celebrate. For that, more and more Indian science, actually Indian need to do a great science so that we get the recognition and we celebrate more and more days. One of the 5 pillars of the Azad Ka Amrit Mahotsav is ideas. I think we need to nurture as well as need to get and provoke more and more ideas from youngsters and everywhere, so that we can try to implement as much as possible for the benefit of the society and the country. Jai Vigyan, Jai Vigyan. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind and inspiring words. कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में हमारे देश के वैज्ञानिकों एवं विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। अब मैं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं।
Honorable Principal Scientific Advisor, Dr. Vijay Raghavanji, dignitaries on the dais, illuminaries in the audience, awardees, press, media, and all the people who have joined through virtual media. Welcome to this National Science Day. And as we celebrate this National Science Day, I would like to reflect on the 75 years of our independence and what has been our successes. We have been successful in IT. We have been successful in mobiles. Is that all? No. We have been successful in cricket and Bollywood in these 75 years. As we saw yesterday, a clean sweep in cricket, and Bollywood is taking care of the whole, is now sweeping the entire world. But that's not all. What are the major scientific achievements that have happened in these 75 years? I think the important ones I mentioned: IT, mobile, space, and nuclear. We have established to be a nuclear superpower. We have established ourselves as a space superpower. What else? Well, we have looked at, our generation in the dais has seen the Jai Jawan, Jai Kisan movement. We have seen the PL 480. We have seen the Colombo plan. We have seen Miss One Meal by our Prime Minister then, Lal Bahadur Shastri ji. And we have seen the Green Revolution. We were importing grains from the US, from Australia, and we had those red wheat at that point in time, which was not the best, and I think much of it was in the silos in the erstwhile DST building that it was stored and then distributed to different parts of the country. And then we saw the Green Revolution, and now we are exporting grains to many parts of the world. So that is a huge, huge achievement that has happened. Following the Green Revolution, we have seen the White Revolution. We have seen the Blue Revolution. We have seen the genetic revolution that has happened in India. So it's not just IT, mobile, cricket, Bollywood, but it is space, nuclear, Green Revolution, White Revolution. Our scientifically developed defense forces have been guarding our nations for these 75 years. And that is, again, because of science, because of our organizations like DRDO and other organizations who have helped nurture these forces with the scientific inputs. What about anything else? Well, India has now developed to be the pharmacy of the world. 60% of the generic medicines used outside of India are of Indian origin. We have been exporting generic medicines to many parts of the world and have taken the lead on that. In terms of health, what has happened? In terms of health, we have become the second destination for health tourism in the world, because 1 out of 5 nurses and 1 out of 6 doctors in the world are of Indian origin. So that is our contribution, that is our science contribution, that is our education contribution for the world, which has changed the way the world perceives India. We have seen how we had the successful management of the pandemic in these 2 years, and India is now deemed and labeled as a vaccine superpower. So the contributions of Indian science have been immense in these last 75 years, right from IT, mobile, cricket, Bollywood, space, nuclear, health, pharmacy, and the Green Revolution, the White Revolution, the Blue Revolution, and genetic engineering, the vaccine superpower. We have really established that India can lead the world in science. More importantly, we have to realize that this science that has been nurtured in these last 75 years has been with only 0.6% of the GDP being spent on science.
Our thinking has been frugal, our thinking has been low cost, our thinking has been to manage with little bit, and therefore we have been innovative, and I think that needs to be nurtured, but our budget also needs to be increased clearly for science so that we could be equal to the top scientific nations in the world in every which way. I think the important message that has to happen in this Science Day and this 75 years of our independence is that we have to focus on indigenous development. We have to focus on translational development. We have to focus on integrated development and all forces working together, how all the science agencies and the health agencies and a whole of government approach that we had for this COVID pandemic really is an example that we need to follow with all the science agencies in the future if we are to lead the world in science in every which way. One little point I wanted to emphasize was, and I think my predecessor has already spoken on, the importance of social sciences. I think for a full rounded development, social sciences will have to be integrated in the STEM sciences as well, because of the fact that that gives a full rounded development. And if you look at the school curriculum that we had in the earlier days, that also needs to be nurtured in every which way, whether it be music, whether it be art, whether it be filmmaking, whether it be playing chess, whether it be Latin or Sanskrit, whether it be, those things have to be nurtured because they instill a sense of discipline in the child from the school curriculum. And that holds the child in good for decades to come, so that the full rounded development of social as well as scientific thinking is taken into account, thinking of the human being as an individual, and that helps tremendously. So I think with these words, I wish a huge success to this Science Day, and also congratulate India on its 75th years of independence. And I'm sure with the new generation thinking out of the box and the way innovation is being promoted in this nation, we are going to see a much, much brighter future, and Indian science will be leading the world. Jai Hind. बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर बलराम भार्गव जी। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम को सहयोग मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डीओएस से। इसी संदर्भ में हमें डीएई सचिव आदरणीय डॉक्टर के.एन. व्यास जी, डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी जी एवं इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस. सोमनाथ जी का प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस मिले हैं। आइए सुनते हैं उनके शुभ संदेश। Honorable Minister of State Dr. Jitendra Singh Ji, Professor Vijay Raghavan, Principal Scientific Advisor to Government of India, Secretaries from various ministries and departments, it's my privilege to address this August gathering on the eve of the valedictory function of Vigyan Sarvatra Pujyate, the Science Mega Expo conducted for last 1 week across the entire country at 75 prominent locations as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's very important to showcase the achievements in science and technology and contributions of Indian scientists to the development of the country. I'm sure it will motivate the young louds to find innovative solutions to many social problems, bringing out such glories of achievements to the current generation and documenting them in various forms such as films, books, etc. to inspire the next generation, which was one of the highlights of this program. Department of Science and Technology through Vigyan Prasar has achieved this the great wonderful feat with the support of various science and technology ministries and departments.
I'm really happy and proud that the Department of Space had a very close and seamless interaction with Vigyan Prasar and Office of Principal Scientific Advisor to organize these events at identified locations. ISRO has deployed exhibits and many senior scientists delivered lectures at identified locations during the expo. The Space on Wheels was a theme-based mobile exhibition bus showcasing ISRO's programs and achievements, which was a center of attraction in all the locations covered at 8 states. It is noted that the response from the students was really exemplary and they were so much enthused to see many of these. I wholeheartedly congratulate the organizers, speakers and event managers for the mammoth effort put in throughout this program for successfully rolling out this mega national event in the 75th year of independence. Jai Hind. Namaskar. My best wishes to the entire scientific fraternity, the academicians, and most importantly, the students of India on the occasion of National Science Day. Again, the trend has started where lots of interest is getting generated in the science. This is very important, particularly on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. We are showcasing the capabilities of this country across the entire country in various cities, what all we have achieved in this. And on that occasion, we are also promoting that we should do a lot into the sciences. And so this country has to grow both in science and technology in a big way. Technological achievements are being done by this nation, but that needs feed from the sciences. So that is the most important thing, and all of us have to look into this particular point and encourage the young community, youngsters in this country to enter into the science stream a lot and graduate slowly from there. And the country, by 2047, we should become a leading nation in the science and technology both. That is what our wish should be, and I am sure that we will all be able to, you will all be able to take it forward and make this nation a great nation in science and technology. Jai Hind, Namaskar. Namaskar. Respected Dr. Jitendra Singh Sir, Minister of State, Prime Minister's Office, respected secretaries of different departments who are participating in this program, colleagues, ladies and gentlemen. It is a matter of great pride that Department of Atomic Energy could participate in such a mega event in which all the departments associated with science and technology were given a chance to showcase the advancement carried out during last 75 years. The theme Vigyan Sarvatra Pujyate very appropriately describes efforts put in by all of us in the field of science and technology, which shows perseverance, hard work and honesty of purpose towards variety of new developments pursued after achieving independence. DAE, which had a good fortune in its formative years to be led by giants like Dr. Bhabha and Dr. Sarabhai, has contributed in indigenization of different technologies. As a part of spin-offs, DAE has also contributed towards societal needs of the people of India. I am thankful to all the visitors, namely students, academia and members of the public who have taken time out and visited different stalls and tried to understand the advancements in the field of science and technology. I am sure that the visit by the young students would encourage them to pursue the field of science with greater vigor, and when India completes 100 years of independence, the efforts by them would help India to shine even brighter by 2047. I am extremely thankful to Dr. Jitendra Singh Sir and Professor Vijayaraghavan Sir who have guided the activities as a part of this great science festival. Thank you very much and Jai Hind. अब सभी गणमान्यों के शुभ संदेशों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है
दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत अभिगम, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व्याख्यान के लिए अब मैं CSIR IGIB के निदेशक प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें और आप सब से तालियां निवेदित करता हूं। Thank you very much. Professor Vijay Raghavan, Principal Scientific Advisor, Secretaries representing Science and Health, distinguished colleagues in the audience, awardees, colleagues, young people who might be watching online. It's a great pleasure to stand here in front of you today to talk on a topic that's very dear to my heart about integration of sciences towards a higher purpose. I am really pleased that Professor Bhargav, towards the end, emphasized a very important part I will make multiple times today, that of the importance of social sciences. So when we start talking about integrated approaches in science and technology for a sustainable future, we have to consider what do we mean by science. To me, amongst many definitions that exist, science is about knowledge and understanding of the natural and the social world. Now, so by this definition, automatically humanities is a science. And while through the course of my talk I may distinguish between science and humanities, I wanted to be very clear that this definition of science already encompasses society. What then is technology? Technology is the application of such knowledge for practical aims. Aims of whom? Aims of society. What is then society? A set of people with common aims, ambitions, culture. There might be some differences, but fundamentally most of us simply want a better future. The Sustainable Developmental Goals articulated by the United Nations, to which India subscribes, came from a meeting in Rio de Janeiro in Brazil, where the idea was, what goal should we have towards the future that we want? The future that we want is the future that we'll be happy with, the future we like to sustain. It can't be just one thing. Today I might speak more about health, the only thing I know well. But amongst multiple goals, all must move in concert because none can exist independent of the other. But when we speak about future, I'm always reminded of this quote I first heard from a very distinguished teacher. I cannot use the word colleague for Professor Srinath Reddy, who spoke about this quote from Paul Valery. As you row a boat, you're always looking backwards but moving forwards. That is exactly what it is when we speak about science for sustainable futures. We can only take inspiration and understanding from the past because we have not seen what the future will hold. And looking back towards what worked, what did not work, is a very critical part of any integrated planning for the future. So when we look at the past, we see one very obvious challenge. And that challenge I take from this cartoon from SKCD. Those of you who haven't gone to this website should. It's a wonderful place for sarcasm with a lot of important grains of truth about science. And what you see is that scientific disciplines, which necessarily exist in silos, are built for education because of a common way of teaching, but also lead to competition, lead to feeling by some areas they're better than the other. And you will notice that when we talk about purity of science, you have bickerings between physicists, chemists, biologists, and of course mathematicians to one complete side, not even bothering to bicker on these topics. The area I come from, medical sciences, is not of course there in this cartoon, but you can see sociology and psychology is on one side. Medicine being half art, half science, and I see very distinguished practitioners in front of me right now, is an amalgamation of multiple things. And
Having practiced medicine to start my career with, moving towards sciences, of late, moving towards, I guess, intersection humanities, I've seen that medicine in itself contained all the integration one wanted. It was only whether we chose to look at it. On the other side, we have these words interdisciplinary, transdisciplinary, multidisciplinary, all of them are nice words. In fact, I would be one of the people to strongly argue that disciplines are required for education. When you want to train people to have strong foundations in sciences, you need to have strong departments understanding the depth of that particular science. You can't make everything transdisciplinary. But when you want to solve problems, problems don't break down themselves like saying, I need one mathematician, one physicist, and so on. You need people working together. By the nature of things, when people work together, the boundaries become blurred. People get trained. These people no longer belong to the original disciplines. They are the people who are a new discipline themselves. That's a transdisciplinary. It doesn't mean that education has to change, that every time disciplines blur, you create a new field. But you realize that there is one part which is strong foundations of science, education, integrated at that level using multidisciplinary approaches. And then there is a part which is solutions and policy and working on problems, encourage people to be transdisciplinary and come together. So how does one get people to integrate? To my mind, there are two important ways. One is a common vision. Ultimately, science, people who love science for science, really read only one thing. They read all kinds of things. That shared love is different aspects of exactly the same knowledge. Another could be purpose-driven people. They all have exactly the same purpose. And this common vision will bring them together. And this is nice. This is lovely when it works. But the other more human way of bringing people together is mutual need and mutual benefit. It could be something as simple as synergy. A biologist really has a biological problem but comes across a thing that he cannot solve because he is not trained for it. Finds a physicist, the two work together. Finds a mathematician, they do some modeling. And by need, they come together. And the other could be something as simple as public and private. The public sector, the private sector have their own strengths, their own weaknesses. Sometimes they can complement each other and come together. Academia industry is the same way. Academia invests in people who want to dig deeper into a particular problem. They might keep digging deeper and deeper even until diminishing returns come, that you might spend 10 years more for that last 10%. While in industry, you may want to move on from a problem to problem based on opportunity. But you will need those people for that last 10% expertise coming out from academia. So you need sets of people with common motivations, needs, benefits, all coming together for an integrated vision. And I was wondering what I would talk about today when I was making these slides. I thought of COVID-19 as a wonderful topic, and all the luminaries on the dais are a great example of how science and health in India integrated to give us one of the best responses in the world. But then I thought I wouldn't. I would speak instead on a topic dear to my heart, which is digital health. And when I speak about it, I use Paul Saunier's definition, which encompasses genomics, which encompasses the idea that humans themselves, by the virtue of a modifiable, writable, editable genetic code, are themselves digital animals now. I thought I would speak about the point that it has all the aspects for people coming together that one could want. If you want to look at economy, digital health is amongst the highest growth components. If you want to look at societal value, I think there is no doubt. During the time of COVID, we realized the importance of telemedicine, apps, a well-integrated data ecosystem. Strategic value, it's positioned for very rapid growth. It's of security, cyber security, all these things are critical. It is by nature transdisciplinary. Even the word digital health already has two very distinct components. Health, as I said earlier, in itself is interdisciplinary, and it's interministerial in policy and governance. Which single ministry can control digital health? You need health because there is health. You will need telecom. You will need IT.
You will need hardcore science and technology to develop the sciences to feed into these other things. You will need academia. You will need those people who invested their life on the last 10% expertise to dig really deep into the topic. You will need industry to create rapid products, fail fast, get back. So you will have people who would fail never, just keep on working at it. And people from industry who would say, fail fast, get on with it. And you would need investments into digital public goods, where the government creates things for free so people can leverage it to build cheap tools. It'll bring back the affordability, what Dr. Bhargav talked about. You will need programs like one that he created at AIIMS in 2007, the biodesign program. You would need all those things, including private investment and new governance. Recently, we heard news about a major conglomerate with well-known geo buying Strand Genomics. You are seeing big conglomerates moving into health now, particularly digital health with my definition from Sonia. This area is one whose time has come. But now coming to the sociological aspect of it, if all that I'm saying is true, won't soon digital become a determinant of health? To some degree, during COVID-19, people who did not have digital access, not everybody does. India has done very, very well. We are a digitally advanced nation, far beyond our LMIC status. But there are people who don't have access. If health will be so profoundly influenced by digital, then digital will become a determinant of health. Once digital becomes a determinant of health, investments into digital education, digital access, digital literacy will become critical. This integration again then is beyond the sciences. It is all the way deep into policy. And this is something for those of you who are interested, is part of a special issue in The Lancet that I had the privilege of co-chairing recently. What we realized is that enfranchised communities and public participation are crucial for citizens to co-design digital health. In fact, you need citizen scientists, a topic I will come back to again when I try to explain the challenges that I foresee. You would need young people to passionately become part of this vision. Otherwise, this field would simply not move forward, and young people growing up in a digital world are the ones whose entire futures depend on this vision that we articulate, for which we integrate. India has done phenomenally well in our way of thinking about digital health. We have the Ayushman Bharat Digital Mission. You can see the National Digital Health Mission ecosystem already put citizens and their data at the center. The Honorable Prime Minister announced a National Health ID, one of the most ambitious programs in the world, by which people can access, control, and use their data, in which this data could be aggregated and made available to people trying to develop that understanding, the insights, the tools. And this vision must succeed if India is to become one of the most powerful nations in this area as well. So we have all the bits and pieces. And when I was looking at the program, I noticed that we will also be talking about later on awards for the collaboration with Intel and DST for artificial intelligence. And I thought to myself that perhaps one of the challenges I would bring out in today's talk would be that any solution to work in India must encompass the situation on the top and the situation on the bottom. It must encompass an area where the working is still analog. Lots of patients are crowding doctors. Things are still being written on paper. At most, what you can temporarily expect is digitization, all the way to corporate hospitals, who are also catering to Indians, where everything is digital from the very beginning, and you would have what is called digitalization. So digitization to digitalization is a natural spectrum that you see in India. But on the top, the overarching vision of the government is digital transformation. In digital transformation, the core pieces, India stack, your ID, your payments, your integrated systems are already in place. Now on top of it, everything else would come together to create high-value services, convenience for people. And because massive amounts of data would flow through the system, beyond what a human being can naturally see,
Many doctors would be using these systems who don't really understand data science, would not come from that background. A lot of talk comes on artificial intelligence, the topic for which we will get some awards. And I would come back to say again that it has huge promise. But I would also say it has a very long way to go, with multi-stakeholder collaboration being absolutely essential for successful delivery. It is a classic example in line of today's talk about integration and the participation of various sectors and types of people. I'll digress a little bit to make my point. Why I'll digress to make my point is to show you what is possible and what does not seem to be possible at this time. Nothing is impossible in the long run. It requires patience and the right collaborations. Some of you may have seen this game, Jeopardy. A typical question in Jeopardy, for which you get a certain amount of points, or in this case, dollars. A question can be something like, the name of this hat is elementary, my dear contestant. It's super difficult for some, super easy for some. Who is it super easy for? A person who can interpret this statement, notice the phrase, elementary, my dear Watson, think of Sherlock Holmes, have read Sherlock Holmes well enough to know he wore a hat, and know the name of the hat was Deer Stalker. For that person, it's very easy. Try interpreting this question by simple English. Very tough. When my distinguished doctor colleagues in the audience, Professor Bhargav, listen to patients talk about their symptoms, sometimes the language can be like this. If you want AI to understand anything, it may know all the answers if the question is asked correctly. Where is the guarantee the question will be asked in a format that a computer would understand? So how did IBM Watson, which became famous for winning this game of Jeopardy, address this problem? They invested in multiple AIs with massive relevant source data. An entire stream of AIs only worked for flexibility in interpreting the questions. That's all they did. Entire deep learning, 50% of AI Watson program was how to build the AIs to interpret questions. Then to each questions, they could find good matching answers. They would only answer if you found a question with a high probability and an answer with a high probability, else you choose not to answer. But doctors don't have that luxury, it's not a game. You can't choose to answer or not to answer, you have to answer something or a person in front of you has a problem. So winning a game is different, but the path to winning in life, for real problems and real solutions of people is immensely more complex. This complexity is not captured in this graph, where IBM Watson wins $77,000 compared to the two best ever participants in history of Jeopardy who were human at $24,000, $21,000 each. Computers will not be 3 to 4 times as good as doctors anytime soon. In fact, when IBM Watson launched the program for oncology, that was called Watson for Oncology, they realized very soon some problems. Jeopardy has clear answers for questions. Jeopardy only needs existing data. In biomedicine, there may be no or many right answers. The answers may be different for questions in different contexts. The necessary data may simply not exist, be wrong, or conflicting. You see this all the time. So how then would we build a new ecosystem in which all these things get taken care of? And before I say how we will take care of it, let me point out one more thing. The challenges of being wrong. A colleague once told me the person who cares most about your health is the person who pays for it. In that sense, insurance companies are your best friends, not doctors. The insurance companies are your best friends because they are the ones who have to pay if you get sicker. So in America, they have an algorithm. It's built in such a way that if it thinks you're getting sicker, they would advance your care so you don't end up in an ICU and cost the insurance company huge amounts of money. And this algorithm was used all over America. When Obermeyer analyzed the data, they found that to have the same score on the algorithm that gives you a higher level of care before you get sicker, black people have to have more chronic active medical conditions than whites. Why is that? Certainly a computer does not care about skin color. That we can be sure of. And you can be almost certain no programmer would program this into the system. Discriminate against that person based on their skin color. How would they know?
The answer turned out to be very simple. How do you know somebody gets sicker? Somebody gets sicker when they start visiting doctors. Are people equally sick when they decide to visit a doctor? No. Rich people will visit doctors far sooner than a sick person, than a poor person would. If you use healthcare utilization data as an index of determinant of health, you will always discriminate against the people who can't utilize or access healthcare. As we go forward towards the solutions for India, I want you to keep this at the back of your mind. No matter how much data you put in, no matter how many good computer scientists and data specialists and telecom experts in which we may lead the world you bring in, there will never be any substitute for real doctors with real understanding of how healthcare systems work. But can a healthcare specialist suddenly come and start looking at this data and contribute? No. From education upwards, collaborations would need to be built, where people learn to speak each other's languages. People get shared experiences, shared goals. Only then will all these things happen. That, to my mind, is a true integration that India needs. Something that has common visions, common interests, synergy, public and private. Somebody wants to build these tools, somebody wants to use these tools, and of course, a true general spirit from governance downwards of how to get this together. So this integrative vision of digital health would require a very high quality data ecosystem. Interagency cooperation will become absolutely critical. All these little pieces of data lying with different agencies must come together. You would need the concept of iterative deployment and assessment, letting go of our arrogance, letting go of the idea that our very first idea or product built in the very first cycle will be perfect, continuous improvements. And we will need something that Professor Bhargav said, I'm repeating again, a complete interface of science and humanities for those who don't already consider social things to be within science. This will become even more exacerbated as you consider other trends requiring efforts. Big biomedicine, reading, writing, editing genomes, personalized medicine, regenerative medicine, brain-computer interface, modulation of behavior. All these things are even more complicated. Big biomedicine, the confluence of big data, AI, biological research, going from cells upwards, trying to understand health from the bottoms up, trying to understand the blueprint and the bricks. This is hardcore science. This will also suffer exactly the same things. Already we are getting to the point, all of you would probably agree if I said I wanted to edit the genome of a person with a mutation that was bad for him to give that person better health and cure genetic disease. But today, you can find genetic variants which are unusual but give you better health than normal. PCSK9 deletion can improve a person's cholesterol and reduce the risk of heart disease. So a person with a normal gene that the rest of humanity has could, in theory, be edited. It's already been done in monkeys for stable, better cholesterol that lasts for years and reduces the cardiovascular risks. It is better than normal health. If you were to modify different levels of the genome, you might find people who can pass on this better health to other people. You could create sectional societies that are better equipped than others. What would that mean? The questions will come like this. How will this change society? There will be a smaller question. Will it succeed technically? I assure you, given enough time, it will. But there will be a larger question. Will it let future generations flourish? Will it increase or decrease inequity? And again, science, beyond cooperation between the sciences, to make sure we technically succeed in doing this well, will need deeper examination by people and by proxy of people, by governments, by empowered citizens, by citizen scientists, people who may not have a science background but want to participate in imagining the future of humanity. Only then can you co-design sustainable futures. Only when everyone respects science, as India has been lucky to have, has less hesitation towards the fundamental power of science, but also as we, the scientists, lose arrogance about the ability that we can change, but whether we should change and how should we bring the change, then only will it all work together. And I would be remiss if I ended this talk without pointing out one thing. No matter what we talk about integrated science,
high quality basic science remains absolutely critical. You cannot translate translational science. You cannot translate what you do not know. So knowledge comes first, translation comes later. If we forget that, we will be in trouble in due course of time. Team science is critical, but support for high-risk, high-reward endeavors, including individual efforts, is something we must remember on a day in which, held in the memory of the work of Sir C.V. Raman. That is individual science at one level. So science from every spectrum, individual level, high-quality science to team science for social purposes, including the people, is critical. And that integration on today's day is what we should all strive for. Thank you all so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने व्याख्यान से हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी। अब मैं आदरणीय प्रवीण अरोरा जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी का सम्मान शील्ड के साथ करें और आप सब से तालियां निवेदित करूंगा। आदरणीय प्रोफेसर विजय राघवन जी, आपसे अनुरोध है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की, आप अपने कर कमलों से इस शील्ड का भेंट करें प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी को। और आप सब से तालियां निवेदित है। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप सबको सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सब पावन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हम सब के बीच पधार चुके हैं। आप सब से पुनः पुनः आग्रह है कि कृपया करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों, युवा अनुसंधानकर्ताओं एवं विज्ञान संचारकों को उनकी उपलब्धियों एवं सेवाओं के लिए विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी के द्वारा इंस्पायर मोबाइल ऐप और इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस सभागार में हम सबके बीच इंटेल की डायरेक्टर एशिया पैसिफिक जापान सुश्री श्वेता खुराना जी भी उपस्थित हैं, उनके लिए भी आप सबसे तालियां चाहूँगा। और अब माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने कर कमलों से इंस्पायर मोबाइल ऐप एवं इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम युवा नव प्रवर्तकों के बीच AI की तैयारी का निर्माण, इन दोनों का अपने कर कमल से लोकार्पण करें। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। अब समय आ गया है With an aim to build AI awareness among youth, the Department of Science and Technology, Government of India and Intel India are launching Building AI Readiness Among Young Innovators for students enrolled under Inspire Awards Manak scheme. The program aims to demystify AI for youth and empower them with a digital-first mindset and will be implemented in 3 phases. Top 200 students will get an opportunity to engage in deep dive AI mentoring by Intel AI for Youth coaches.
and top 50 AI innovations will be awarded through a mega national showcase. Let us make our next generation AI ready. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। अब समय आ गया है आज के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले वर्ष के संस्थागत और व्यक्तिगत उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च यानी अवसर और 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत साल 2021 के लिए इस बार सामान्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए तिरुवनंतपुरम के पीएन पनिकर फाउंडेशन को श्रेणी ए में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। पीएन पनिकर फाउंडेशन के लिए आप सबसे तालियां चाहूंगा। इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई पीएन पनिकर फाउंडेशन को। पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर रमेश चंद परीदा को श्रेणी बी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। डॉक्टर रमेश चंद्र परीदा, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर रमेश चंद परीदा जी को। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कालकाजी नई दिल्ली के डॉक्टर एच.के. चोपड़ा जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर एच.के. चोपड़ा। तालियों की कमी ना हो इसका निवेदन है। बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के लिए गुरुग्राम की श्रीमती नरेश यादव जी, बहुत बहुत बधाई श्रीमती नरेश यादव जी। तालियों की अनुगूंज आप सबसे प्रार्थित है। बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के लिए श्रेणी सी में गोवा के श्री विजय कुमार चंद्रकांत वेरेंकर जी, बहुत बहुत बधाई विजय कुमार चंद्रकांत वेरेंकर जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नवप्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए श्रेणी ई में
कानपुर के डॉक्टर विकास मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर विकास मिश्रा जी। तालियों की आवृत्ति बनाए रखें, ये निवेदन है। नवप्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए श्रेणी ई के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुमन मोरे जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर सुमन आपको। नवप्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए श्रेणी ई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। नवप्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए वाराणसी के नेशनल एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन को ये पुरस्कार जाता है। बहुत बहुत बधाई इस संस्थान को, नेशनल एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन वाराणसी से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी एफ के लिए कश्मीर के जलाल उद्दीन बाबा, बहुत बहुत बधाई आपको जलाल उद्दीन बाबा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी एफ के लिए नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों की अनुगूंज बनाए रखें क्योंकि अगला अवार्ड अवसर अवार्ड है। अवसर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्टोरी पीडीएफ कैटेगरी गोज टू डॉक्टर प्रज्ञा परिमिता रथ फ्रॉम न्यू दिल्ली। प्लीज तालियों की अनुगूंज से शोभा बढ़ाते रहें। अवसर अवार्ड फर्स्ट प्राइज PhD category goes to Mr. Ajay Chandrakant Lagashetty from Pune, Maharashtra. Avsar Award second prize PhD category goes to Mr. Anup Singh from New Delhi. बहुत बहुत बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अनूप सिंह। अवसर अवार्ड थर्ड प्राइज इन द PhD category goes to Miss Diksha Pandey from New Delhi. Congratulations, Miss Diksha Pandey. आप सभी विजेताओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और एक निवेदन है सभी विजेताओं से कि कृपया मंच पर
विराजमान हो और गणमान्यों और माननीय के साथ एक समवेत फोटोग्राफी करवा लें। सभी अवॉर्डी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और समवेत फोटोग्राफी की इस रीत को अंजाम दें। सभी विजेताओं के लिए तालियां तो बनती हैं। अपनी अपनी ट्रॉफी के साथ आएं तो और मज़ा रहेगा और शोभा बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद करेंगे और सहेज कर रखेंगे। आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि सबके उत्साहवर्धन के लिए तालियों की अनगूंज बनाए रखें। सभी विजेताओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं। कैमरे में इस क्षण को कैद करने के लिए आप सभी का भी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्यों को अनुरोध करता हूं अपनी सीट पर विराजमान हों और विजेताओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी सीट पर विराजमान हों। आइए अब बढ़ते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के भव्य समापन की ओर, जहां मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी, निदेशक विज्ञान प्रसार को। वे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की सप्ताह भर की गतिविधियों से हम सबको अवगत कराएंगे। आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी के लिए आप सबसे तालियां निवेदित हैं। Namaskar, respected Dr. Jitendra Ji Singh, Honorable Minister of State for Science and Technology, Minister of State for Earth Sciences, Minister of State PMO, Personnel, Public Grievances, Pension, Atomic Energy and Space, Government of India, respected Dr. K. Vijay Raghavan Ji, Principal Scientific Advisor to the Government of India, respected Dr. S. Chandrasekhar Ji, Secretary DST, respected Dr. M. Ravichandran Ji, Secretary MOES, respected Dr. Shekhar Mandey Ji, Secretary CSIR, respected Dr. Rajesh Gokhale Ji, Secretary DBT who just couldn't join us today, respected Dr. Balram Bhargav Ji, Secretary DHR, and respected Dr. Anurag Ji Agrawal, who is the Director of CSIR IGIB. Ladies and gentlemen, at the very outset, my heartfelt thanks to all of you for making the event Vigyan Sarvatra Pujyate a great success and helping us achieve more than what we expected. This is indeed in line with my previous stint at the US-based multinational Excella Technologies, where I worked, and always with only one motto that we had: exceeding expectations. We've tried to achieve it here as well. To celebrate the nationwide glorious iconic week of science and technology under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, when we all met with the PSSR on January 10th to plan this week, this was where the journey began. With less than 2 months, the team at Vigyan Prasar approached organizers at 75 locations around the country.
The response was overwhelmingly positive. We swung into action and conducted online meetings every day with all our 75 participating partners. This is how we began. Developing 75 products for 75 locations to keep 7 days duly occupied in a short time was indeed a challenge. I'm glad to share that we were able to pull it through successfully. We developed 75 posters from the annals of history, 75 posters about 75 milestones of the Indian SNT, 75 films, a book on 75 scientists, another book on 75 under 50, 75 lectures at 75 locations every day during the week, and thus 75 much more happened. Here is a quick sum up of the week Vigyan Sarvatra Pujyate, which, as we all know, means that science is revered all over the place in Sanskrit. In New Delhi and other 75 locations, 75 exhibitions and book fairs were planned. In Delhi, the footfall grew with every day that passed by, and ultimately we witnessed the highest footfall on Sunday yesterday. I'm glad to share that places other than Delhi saw a much bigger footfall. NIT Warangal reported more than 100 buses full of school children from all over the place. Long queues of people were reported lining in front of the lecture places in places like Purulia and Darbhanga in Bihar, Leh in Ladakh, Tirunelveli in Tamil Nadu, Thrissur in Kerala, Mysuru in Karnataka, and much more. Besides successful lectures, posters, exhibits, we had organized a number of competitions through mygov.in. We have received more than 20,000 entries, and as I speak, the tough job to evaluate them and declare a winner in each category is on. We expect to announce the winners of these competitions sometime during the mid of March 2022. Today, later during the program, we will be unveiling few more pictorial books, some of which have been prepared during a very short period of 22 days. I want to profusely thank media for all over the nation to have covered this event in a very big way, as my handheld and my email inboxes are full to the brim. Here is a very short film for all of you to show the various elements of success of Vigyan Sarvatra Pujyate. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी। अपनी टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम पर केंद्रित एक लघु चलचित्र को प्रस्तुत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन तमाम विज्ञान प्रेमियों का जिन्होंने विज्ञान सर्वत्र पूजिते कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया, सफल बनाया। अब मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आदरणीय डॉक्टर के विजय राघवन जी से कि वे विज्ञान सर्वत्र पूजिते के भव्य समापन के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें और आप सबसे तालियां निवेदित है। आदरणीय मंत्री जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, my colleagues on the dais, Dr. Anurag Agarwal, Dr. Balram Bhargav, Dr. Shekhar Mande, Dr. Chandrasekhar, and Dr. Ravichandran. It's a great pleasure to be with all of you at the auditorium here, particularly the awardees. Congratulations to all of them and all our fellow scientists, ladies and gentlemen. This culmination of the series of functions of Vigyan Sarvatra Pujyate has been a very momentous event, and I'd like to particularly congratulate Vigyan Prasar, Dr. Nakul Parashar and his colleagues for managing this whole event very successfully. Today, the world is in a position where it needs science more than ever. And India is in a situation where, because of its strong foundations in fundamental research, in applications, and the connection between science and our people and our industry, that we are able to attend to all these challenges. Indian science has extraordinarily strong foundations, and these foundations were put in place by the development of major institutions in mathematics, chemistry, physics, engineering, biology, and medicine. Over the last few years, we have seen a substantial expansion in these foundational areas, particularly in the growth of our central universities, our Indian Institute of Science, Education and Research, our Indian Institute of Technologies, or All India Institutes of Medical Research. All these places have managed to attract talented researchers and faculty members and students, and this attends to the important set of opportunities where our young demography now has. Going forward, these efforts in fundamental science research, in medicine, in clinical research, in engineering, all of that need to be integrated to attend to important global problems, and national ones too, of course. We would not have imagined that the pandemic would have taken place when it did, but our ability to respond to it proactively was because of an interdisciplinarity and a coming together of science, technology, medicine, social science, and public health. This now has to be a standard for all times to come, even as the pandemic wanes. There will be all sorts of other tensions which arise in the world. Global supply chains will be an issue, and therefore Atmanirbharta and manufacturing, which connect to deep tech, is also important. Finally, we heard an extraordinary lecture by Dr. Anurag Agarwal, which pointed out how combining digital and health and medicine in a manner which reaches the poorest of the poor and yet provides them with the best quality medicine is something which is ambitious, very difficult, but certainly feasible in our context, again because of our investments in IT, electronics, medicine, biology, chemistry, and so on. India also has now a great and important role to play in drugs as well as in vaccines. We are known as the generic drug capital of the world and the vaccine capital of the world. And this needs to expand to innovation in drug discovery and vaccines. Here, laboratories of the Council for Scientific and Industrial Research, our university laboratories and our industry need to work together along with those of the Indian Council for Medical Research and our medical colleges, so that both the identification of areas where drug development and vaccine development needs to take place and a proactive measure to do all this is done. Dr. Balram Bhargav alluded to our strengths in many areas of global contribution, and these range from IT to movies to cricket, and also he outlined the very many areas in science and technology where we have contributed and continue to grow. This growth now has to be combined with innovation because we live in a cyber-physical world where all the information we collect
from diseases, from transport, from pollution, to air quality, all of that need to feed back into decision making so that we live and grow in a sustainable world. Thank you very, very much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर के विजय राघवन जी। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अवसर पर विज्ञान प्रसार ने 75 वैज्ञानिकों की जीवनी पर एक पुस्तक पिछले सिर्फ 22 दिनों में तैयार की है, जिसका विमोचन अब माननीय मंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही DAE की एक विशेष प्रस्तुति का भी अनावरण माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं मंचासीन माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और गणमान्यों से आग्रह करूंगा कि वे इन पुस्तकों का अनावरण कर हमें कृतार्थ करें। पुस्तकों के अनावरण और लोकार्पण के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पावन अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति को कृतज्ञ प्रणाम करता हूं। संपूर्ण कार्य के सफल संयोजन के लिए हम सब के प्रिय माननीय मंत्री महोदय का आशीष हमारे साथ रहा है। मेरा आपसे सविनय आग्रह है कि हमें अपने आशीर्वचनों से पुनः पुनः आशीष प्रदान करें। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Principal Scientific Advisor to the Government of India and an eminent scientist, Dr. Vijay Raghavan, Secretary Science and Technology, Dr. Chandrasekhar, Secretary CSIR, Dr. Shekhar Mande, Secretary Earth Sciences, Dr. Ravi Chandran, Secretary DHR, Dr. Bhargav, Professor Anurag Agarwal, eminent members of the scientific fraternity, ladies and gentlemen. At the outset, I have to perform the pleasant task of congratulating all the recipients of the awards. And I'm sure when we announce that we are distributing national awards to eminent scientists, all of you would contribute in enhancing the glory of these awards through all that you have been doing in the past and also that you will continue to contribute in future. It gives me a kind of a personal gratification in the release of these books because, as Dr. Raghavan was reminding me, it was my initially suggestion that since we are observing 75 years of independence, so we should have a collection of 75 founding fathers of different streams of science in India, and 75 young scientists below 50, 75 eminent women scientists, which I am sure will come out, and also another compilation of 75 at 75, because we have a number of seniors who are active at 75, or those who have been active in the past. And though the collection that has been released today is a compilation of 75 young scientists below the age of 50, it has been occurring to my mind for the last few months that actually we have to now, since the lifespans have increased, the age of the young scientists also has to be classified into 3 categories. We have to have a category below 15, another category 15 to 35, and the third one 35 to 50. Because each day, I think, is something very amazing and sometimes very incredible
we come across youngsters in the adolescent age with a lot of innovative mind. And we have had the opportunity of referring a few of them, searching them and then referring to them. And some of them are doing very tremendously appreciable tasks even at ISRO, working on nano satellites and coming from towns where they didn't have any background or exposure to that kind of a work. So if we catch them young and mentor them, then the other service also is not only to the science but also to the society, because we enabled them to escape from the adverse influence of their parents. Because once the child crosses 15, he is shown the road to the coaching center. And the first one to do that is the parent. So if we have a category below 15, and then try to work on it, to focus on it, I think we'll be doing a huge service not only to the nation, to the society, as well as the parents who might realize it later in life. So that was some of the ideas that came when we were contemplating how to. And of course, I have to compliment the successful culmination, ये जो श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ एक सप्ताह चला, विज्ञान सर्वत्र पूछते, the Vigyan Prasar and their team, and I'm sure they are there in a large number. Being a scientist, I could guess that when somebody took the name of Nukul Prashar, and there was a huge clap out of proportion to the others. So I knew the team was there. I think when Raghavan said, but anyway, that is for healthy reasons, good reasons, that you are there and you are full of enthusiasm to pat your own back, because if you don't pat your own back, who else would? बाहर तो आलोचना होगी और कोई मन चला ये भी लिख देगा कि एक सप्ताह और कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही करते रहे. So, but I think the spirit of this 1 week of commemoration was to celebrate and to worship. और जब हम कहते हैं कि विज्ञान सर्वत्र पूछते, we don't say it for nothing, we actually mean it. And then coinciding it with 75 years of freedom itself has a significance which is not often talked about, because many of our eminent scientists like A.C. Ray have been very well noted freedom fighters as well. And at the same time, there has been another category of freedom fighters who were not scientists, but were constantly devising scientific means to supplement the freedom struggle. तो स्वतंत्रता संग्राम को बल देने का काम किया. And you will be surprised when I speak the name of the one who I think led this genre, was none less than the father of the nation, Mahatma Gandhi. At the risk of sounding unorthodox, I would say that he institutionalized the use of biological resistance against British might. And that was Satyagraha. तो कोई हथियार नहीं उठाना, कोई वेपन नहीं उठाना, उपवास पर बैठ जाना. So it was not biological warfare that is talked about in evil terms these days. No use of the virulent weapons or means. It was simply resistance. So I think scientists' contribution in the freedom struggle and the freedom struggle through scientific means all have gone hand in hand. And it's an occasion, an opportunity for us to remind ourselves of this and also to celebrate that. अब ये जो एक सप्ताह हमने किया, इसके पीछे का मूल मंत्र क्या था? So that we also have the opportunity to introspect where we started from, where we have reached, where actually we could have reached if we were better equipped. And if we had certain disadvantages, how best to make up in the next 25 years. And I'm sure, since all of us belong to the scientific fraternity and we are tutored to be researchers, this is actually what was meant to be the subject of research over the last 1 week. And if you recall, जिनके नाम से आज C.V. Raman Day मना रहे हैं,
didn't have a laboratory to do his experiment, and yet made it to a Nobel Prize at a time when Indians were hardly considered, even Asians were hardly considered for a Nobel Prize. So what a struggle would have been for him to reach where he reached. And then even soon after independence, we had Homi Bhabha. When he set up the Bhabha Atomic Center, even the flower pots were designed by him. With meager resources they started. It was not only setting up a laboratory. Or on the other side, when you have the founding fathers of the Space Department, whether it was Sarabhai or Satish Dhawan, there were times when the launchers were carried on the bicycle carriage. So it's been such a journey. We started off when others were well established. So now that we are better equipped, how do we make up for what we didn't have at our disposal in the bygone years? And that would help us to create a roadmap for 2047, which Prime Minister has been repeatedly reiterating as Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I think the biggest asset for the scientific fraternity of India today is to have a Prime Minister like Shri Narendra Modi. And again, I'm not saying just because I'm a part of his team, because before that, much before that, I was part of your team, still continue to be so, and a researcher. And we have learned to speak not without evidence. And the evidence is that here is the Prime Minister, if you take a chronology, statistical, virtually every Independence Day address rolls out a scientific plan, which never happened in the earlier regimes. On one occasion, he spoke about digital health mission. On the other occasion, I think last time he spoke about hydrogen mission. In the very first Independence Day address after he took over as Prime Minister, he spoke about Swachhata, cleanliness, which has huge clinical relevance in a country like India where we didn't have toilets for girls. We were exposing them to a host of infections, beginning from urinary tract to all kinds of ascending infections. So we have a political dispensation which has the will and the understanding. And I think it's now up to us to make the best of it. And COVID gave us an opportunity to realize our inner potentials. We were taken aback, as Dr. Raghavan said, nobody could have anticipated. And the manner in which we reoriented ourselves, particularly the medical fraternity. In fact, I was saying this once at AIIMS, I said, we are guilty as teachers. For the last 20-25 years, we stopped concentrating on infectious diseases because we were only dealing with non-communicable diseases. Because after the advent of antibiotics and the other antimicrobials, by and large it had come under control because the first antibiotic came in the form of penicillin around 1948-47, and the first line of tuberculosis drugs came in the early 1950s. So that era of sanatorium management, everything was over, and then we were into the era of the civilized diseases, the heart disease, diabetes, badi bhayankar naam wali. And we were focusing on that. But suddenly our residents overnight got oriented to treat, and that was the inherent legacy of science. इसीलिए science सर्वत्र पूजते, विज्ञान सर्वत्र पूजते, because it was embedded in our culture. So we were born with that kind of orientation. And of course, we had been emphasizing for quite some time, but it was not realized how to work with an integrated approach. We talked of holistic medicine as a fashionable phrase. We didn't actually practice it. COVID forced us to practice it and taught us to work together, regardless of whether we like each other or not. I may not be comfortable with Dr. Bhargav, but I have no choice. He rules out the guidelines, I have to follow. All three of us may be vying for the same post of director, not like to wish to see each other's face. But what to do? COVID brings us together on the same platform. So this has been a comradeship at professional level, at other levels, and has actually been a great training for the scientific fraternity. Biotechnology, Rajesh is not here.
was not given much or its due importance, unfortunately, by the medical fraternity. Now they look up to biotechnology, the first DNA vaccine, the nasal vaccine. They have no other choice. They have to reach out to Rajesh Gokhale. So that integration has already happened. And now the challenge is to carry it forward because it is going to help us even after COVID. And with the new means, I didn't have the opportunity to listen to Dr. Anurag Agarwal, what Dr. Raghavan was referring to. But yes, we are actually heading for an era where human interface may become very negligible even in medical science. In the good old days, soon after independence, the first generation of physicians, which was represented by Dr. Chatani in North, Dr. Golwala in Bombay, they would say pulse is the most important. So from the pulse you could diagnose even typhoid, from the rate of the pulse. The volume could give you something, the rhythm could. Now I am actually, for the last 5 years, conducting an experiment in my own constituency. We have arranged a digital mobile clinic. We don't have a single medico inside. We just tied up with 4 hospitals, one in Bengaluru, one in Hyderabad, one in Surat, one in Ahmedabad. And there's a group of 3 or 4, 5 boys in their mid-20s, some of them from Karnataka, some of them from Gujarat. So make the patient sit. In 20 minutes, they get the entire body profile, cardiogram, etc., everything. And in the next 10 minutes, they connect the patient to the concerned specialist in whichever hospital relevant. And I think in the times to come, even that will be over and the artificial intelligence comes in. So not only that we are moving ahead, the pace of our movement, the doubling time of the knowledge information is also increasing at a very fast pace. And this digital van which I am referring to, we moved it through about 185 villages in one district, which is one of the remotest districts where many of the people had not even seen a doctor. And therefore, we'll have to prepare. Now, like, for example, I was thinking, because this Khurafati is what I do every morning for an hour. Just as clinical exam was very important, at least in my specialty, now you will have to conduct an exam to test how best the medico could handle the technology to elicit the kind of information without maybe possibly even touching the patient. And therefore we have to, this is an opportunity, this 1 week was actually dedicated to this kind of worship. And not only that, now the science has virtually entered every sector. And since I am dealing with multiple departments, I was telling the friends in the personnel ministry, I said governance has also become technology dependent. So I gave them a new theme for the next conference, technology-based governance. With the online things happening and artificial intelligence even picking up the grievance between the lines from a representation made, and then educating the concerned bureaucrat about what it is. Yesterday, I have to compliment for the Science Expo also, which went out very successfully. I was particularly gladdened to see large number of children there. And I made a suggestion many years ago, but I was not directly connected to this. I think we'll revive this through Secretary of Science and Technology. We will write to the concerned officers in the Education Department to include some of our science monumental locations in the itinerary of their school and college tours. What is happening is that in December, around the month of December every year, this country has had a tradition since independence of having school conducted tours. So when they come to Delhi, they go to Jantar Mantar, they go to Red Fort, then they go to Qutub Minar. So I was telling the other day, even if you don't guide them, they'll go. But none of them goes to the National Physical Laboratory, which is looked after by Dr. Shekhar Mandle, the oldest possible in India.
which was actually born along with independence. And so also we have huge lot of monumental institutions across the country which are not visited. And the kind of enthusiasm that I witnessed in young children yesterday made me very optimistic that if we actually could show the way, they are looking for it, but they don't know where it is. So many years back in the Pragati Maidan, we set up a atomic energy segment called Hall of Nuclear Power, because I realized that space and atomic energy are the two departments which for legacy reasons are not having their headquarters in Delhi, one in Mumbai, one in Bangalore. And we again insisted, but the education institutions were not keen. But one day, many years ago, before this COVID, I went on a Sunday and I found that many children coming there. So if you have to actually search for the real talent, then you have to actually enable them to discover themselves. And these are the institutions. So I think next time when we hold an expo like this, and even otherwise, we can, this is one initiative of my mind which we could do in the ministry. And the other thing is we could also have combine this expo with B2B meetings, because we have to engage industry so that we don't lose out startups. So learning from what I saw yesterday, I think these are some of the further value additions which we could do, because as I said, if we are looking at India in 2047, we have to remember that the young or the youngster with 25 years of active service ahead, or in other words, young with 25 active years ahead, is what is going to be our investment. So they are our asset and they are our investment. So how best and optimally we can invest? Because it's very difficult to visualize 2047, because often we start looking at it through the prism of 2022, which I hope as scientists you will realize does not happen. I was telling the other day, even now we are unable, because we have to develop indices of our 2047. I'm sure we'll take up this project also. We are talking, even when we talk of digital health, we are talking in the terms of telemedicine, artificial intelligence, not in terms of what else could be there, or maybe replacing this entire thing. And if you have to understand what I am saying is, just look back 25 years, which means look back to 1997. What was the most path-breaking innovations? One was courier service. It became so easy for us to send our slides for conferences, such a good replacement for delayed delivery of letters by postman. And now where is this? All the couriers are closed down. They're out of business. What was the other path breaking? These PVR cinemas. And where are they now? Half of them converted into malls and markets. Again out of service, out of job. And even 10 years back, you had these digital books, no longer required, because you carry the entire world's library in your pocket. So 25 years can't be visualized from the prism of today.
Not to mention a Vigyan Prasad team which did a commendable job. Each of us has put our best efforts working beyond the call of duty to make VSP a success. We hope science and technology will continue to play an indispensable and ever-increasing role in the life of every citizen and that of nation. We believe the Vigyan Sarvatra Pujyate go miles in firming the roots of science and technology in the society and inculcating scientific temper among all. With our heads held high and hearts filled with pride and glory, let us stand up for the national anthem. Thank you and happy Science Day. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी गणमान्यों और विज्ञान प्रेमियों का पुनः without hands. Nikita fucking said. Nikita tool. Kunun tachikun nakad dimaizu. Kunun tachikun nakad dimaizu. Sujan dilya jigar me mangaham. Magat semyanyan chanyan athan kun. Mathao paga pet hisab baki. So yeliyak teliyak buposh lagay. So yeliyak teliyak buposh lagay. Ba alway posh nulisans light. Chana ganimat. Chana ganimat tenish yumberzal. Yemis achanman shaab baki. इज्जत मौब हमारे सरपरस्त आला शेखुल जामिया आली जनाब प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, फजीलत मौब मेहमान एजाजी आली जनाब प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब, रईस जामिया शेर कश्मीर ज़र्रे दानिशगाह शालीमार, हमारे बेपनाह अकीदत व मोहब्बत के मरकज इज्जत मौब आली जनाब प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर साहब,
साबक शेखुल जामिया मरकजी जामिया कश्मीर, आली जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब, रजिस्ट्रार मरकजी जामिया कश्मीर, फजीलत मौब डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, रजिस्ट्रार जामिया कश्मीर, आली जनाब डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, डीन बराई मीडिया स्टडीज मरकजी जामिया कश्मीर, और इस मेले के डायरेक्टर और बाकी मेहमानान गिरामी, आप सबका दिल की उम्मीद गहराइयों से हम खैर मकदम करते हैं। यकीन मानिए कि आपकी आमद हमारे लिए बाहिस इज्जत और इफ्तिखार है। लोलिक मीन पयाम शहरोगाम से की अथियम्बर जलन सलाम खुश कलाम से की निदाए सुबह शाम मीठ जाम से की महफिलन हुंद एहतिमाम रंगो शाम से की। हाज़रीन और नाज़रीन, आप सबको बताते चले कि ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा दिलकश नगीनों में से प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर, प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, मारूफ ज़रई साइंसदान और रईस जामिया शेर कश्मीर ज़रई दानिशगाह शालीमार, प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर साहब, साबक रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर, प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब, रजिस्ट्रार मरकजी जामिया कश्मीर, डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, रजिस्ट्रार जामिया कश्मीर, डीन बराई मीडिया स्टडीज मरकजी जामिया कश्मीर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब तशरीफ फरमा है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मरकजी जामिया कश्मीर मुल्क में आला तालीम के मतनुए मौक़े फराहम करके कई नस्लों की इल्मी और अदबी तशनगी को बुझाने का एक अहम कारनामा अंजाम देने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। ये दानिशगाह अपनी रंगारंग इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों की वजह से भी इल्मी और अदबी हलकों में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई है। साइंस की खिदमत के ताल्लुक से इस दानिशगाह ने तदरीस के साथ साथ वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म की इल्मी और अदबी सरगर्मियों का सिलसिला भी कायम रखा है, जिसके तहत वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, बहसो मुबाहिसा का इनकाद भी शोबे का अहम जुज़ है। इसके अलावा मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के साइंसदान और दानिशवरों की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं, ताकि तलबा को इस जमाने की, अपने जमाने की वहीदुल अस्र शख्सियात से भी इस्तेफादा हासिल हो। ये सबके लिए स्कोप मेला भी इन्हीं प्रोग्रामों की एक कड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मजलिस में हमारे साथ मीडिया स्टडीज के दानिश्वर उस्ताद दीन मीडिया स्टडीज मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब तशरीफ फरमा है। अब सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए अपने खैर मकदम कलिमात से इस इख्तितामी मजलिस को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम सामीन। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है तमादम सदाए कुन फयकून। सफ़े सदारत में तशरीफ फरमा इज़्ज़त माफ फॉर्मर वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और हम सब के हर दिल अजीज प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर साहब, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, मेरे साथी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब, कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, सफ़ाई सामाईन में तशरीफ फरमा मेरे कुलीग्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीन हजरात, प्रोफेसर हजरात, कश्मीर यूनिवर्सिटी से तशरीफ फरमा फैकल्टी मेंबर्स, हमारे कॉलेजों से आए हुए हमारे दोस्त और टीचर हजरात, स्कॉलर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स ऑफ DCJ, स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस, मेरे लिए ये बाइस मसरत है
और खुशी है कि मैं आपको इस अलविदाई तकरीब पर, इख्तितामी तकरीब पर आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और आपकी हाजिरी से हमारी हौसला अफजाई हुई है। पिछले 7 दिनों से चले आए इस स्कोप मेले में जिस तरह से आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, बावजूद कोरोना के, बावजूद खराब मौसम के, आप लोग यहाँ आए, आपने हमारी महफिल में इस मेले में शिरकत फरमाई, तो हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। यहाँ मैं इस बात का तज़किरा भी करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ दोस्त जो ज़बान से बहुत मोहब्बत रखते हैं और जिनका एक शिकवा, एक गिला था कि इस मेले में कश्मीरी और उर्दू को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया गया। ये बिल्कुल हक बजानिब है, मगर इसके पीछे कुछ ऐसे अनासिर हैं जो हमारे हाथ से बाहर हैं। हम इस हकीकत से नाबलद नहीं कि इंसान हमेशा जज्बात की जबान ही समझता है, और इस बात में दो राय नहीं कि हमेशा जज्बात की जबान मादरी जबान ही होती है। हम कितना भी अंग्रेजी जानने वाले क्यों न हो, हमने कितना भी शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ न पढ़ा हो, लेकिन गालिब, इकबाल, हबा खातून या रुसल मीर, जब तक हमारी बात में इनका तज़किरा न हो तो जज्बात असर नहीं रखते। हम अपने जज्बात अपनी मादरी जबान में बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। इसलिए जिन दोस्तों ने शिकवा और गिला किया है कि उर्दू और कश्मीरी को नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनका गिला अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि पिछले निस्फ साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास विज्ञान प्रसार का एक प्रोजेक्ट है, स्कोप इन उर्दू एंड स्कोप इन कश्मीरी। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी एक हकीर कोशिश है कि हम साइंस को किस तरह से अपनी ज़बान कश्मीरी में और उर्दू में पॉपुलराइज करें, ताकि जो उर्दू जानने वाले, कश्मीरी जानने वाले लोग हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं साइंस के उन बरक़ात से जिनसे अभी हम नाबलद हैं। और पिछले 3 महीने से बाकायदगी से तजस्सुस नाम का एक रिसाला, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर हमने फराहम किए थे, और कश्मीरी में गाश नाम का महानामा बाकायदगी से शुरू हो रहा है, बाकायदगी से शाया हो रहा है। और इसमें हमने कोशिश ये की कि जो हमारे मुकामी लोग हैं, जो हमारे मुकामी साइंटिस्ट्स हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कि वो हमें उर्दू और कश्मीरी में मकाले भेजें, हम उनको देख के पब्लिश करें। मगर सितमी ज़रीफ़ी ये है कि जितने भी आज तक हमें मकाले मिले हैं इसमें छापने के लिए, वो ज़्यादातर बल्कि अक्सर अंग्रेज़ी में ही मिलते हैं। तो बाद में हमारी जो टीम है वो इसको उर्दू में, कश्मीरी में ट्रांसलेट करके छपाते हैं। इस 7 दिन का जो हमारा ये स्कोप का मेला था, इसमें हमें कोई ऐसी जबान की पाबंदी नहीं थी, क्योंकि ये स्कोप उर्दू और स्कोप कश्मीरी से बाहर था, ये स्कोप के अंडर था। स्कोप एक बड़ा प्रोजेक्ट है डीएसटी का, जिसमें वो पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस करते हैं, उसमें लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन हमारी कोशिश ये रही थी कि जितने भी लोगों को हमने बुलाया था इसमें अपने मकाले पढ़ने के लिए, पेपर प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, हमारी कोशिश थी कि वो अपनी मकामी ज़बान में, उर्दू ज़बान में पेश करें। मगर वो कोशिश शायद हमारी उतनी कामयाब नहीं हो सकी। एक हमारे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर बशीर गनाई साहब ने प्योर कश्मीरी में अपना मकाला पढ़ा,
बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत लोगों ने उसको सराहा भी। हमारे प्रोफेसर गिलानी साहब ने उर्दू में अपना मकाला पढ़ा, बाकी लोगों ने मिक्स्ड लैंग्वेजेस में मकाला पढ़ा। लेकिन मेरा अपना जाती तजुर्बा है, जो मैं पिछले 4-5 महीने से देख भी रहा हूँ, कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप आइए पेपर प्रेजेंट कीजिए, और उस पर जब हम जबान की लगाम लगा लेते हैं कि भाई साहब उर्दू और कश्मीरी में ही पढ़नी है, तो अक्सर देखने में आया कि वो राही फरार अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि साइंस मेला हमने इसलिए किया था कि यहाँ पर लोगों को साइंस का ज्ञान मिले। इसमें हमारे रिसर्च स्कॉलर्स आए जो अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, कश्मीरी भी जानते हैं। तो एक मिक्सड लैंग्वेज में हमने कोशिश की कि जो हमारे लोकल साइंटिस्ट हजरात हैं, क्योंकि इसका जो स्कोप फेस्टिवल का था, ये लोकेशन बेस्ड था, ये लैंग्वेज बेस्ड नहीं था। हिंदुस्तान के 75 सिटीज में ये कायम किया गया, और हर जगह पर लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाटएवर लैंग्वेज वाज पॉसिबल, उसमें इसको किया गया। तो हमारी भी वही कोशिश रही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 दिन का मेला बड़ा कामयाब रहा। जैसा कि मैंने कहा, कोरोना भी था और मौसम भी हमारा साजगार नहीं रहा, उसके बावजूद भी इस मेले में लोगों ने शिरकत की, अच्छे मकाले पढ़े गए, मीडिया में इसकी काफ़ी पजीराई हुई। तो ये सब हुआ जब आप लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, और इस दिलचस्पी से मेरी हौसला अफजाई ये होती है कि इंशाल्लाह कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी जोमा हैं जिन्होंने आज तक हमें सपोर्ट किया है इन चीज़ों को आगे लेने के लिए, उनकी हौसला अफजाई से, आप लोगों की हौसला अफजाई से इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे। और हमेशा कोशिश ये रहेगी कि हम कोशिश करेंगे कि ज़बान के लिए भी, ज़बान का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उसमें जैसा मैंने कहा, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि आज भी हमारा कश्मीरी में, उर्दू में उतना साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन एक कोशिश है, साइंस जो स्कोप प्रोजेक्ट हमारा उर्दू और कश्मीरी में है। इनफैक्ट मैं बताता चलूं कि हमने मार्च में एक ट्रांसलेशन का वर्कशॉप भी रखा है, जिसमें हमने जो साइंस जानने वाले लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हजरात हैं या यंग साइंटिस्ट हैं, हमने उनको मदऊ किया है, हमने लैंग्वेज के लोगों को मदऊ किया है। कोशिश ये रहेगी कि 5 दिन का जो वर्कशॉप है उसके बाद हमें कम से कम 20-25 मसवदे मिलेंगे जो हम अपने तजस्सुस में और गाश में छपाएंगे, और जो लोग उसमें शिरकत करेंगे उनकी भी एक सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उनकी एक कैपेसिटी बढ़ेगी कि वो आइंदा से उर्दू और कश्मीरी में हमें जो है मवाद फराहम करेंगे। ये 7 दिन का जो हमारा तकरीब यहाँ हुआ, इसका 22 तारीख को इनिकाद हुआ था। पहले एक नेशनल इनाग्रल था, उसके बाद इसी हाल में हमने 22 तारीख का इसका लोकल इनाग्रल किया, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के रईस जामिया प्रोफेसर तलत साहब भी मौजूद थे और हमारे वाइस चांसलर साहब भी मौजूद थे। और उसके बाद 23 तारीख को बाकायदगी से इस 7 दिन के प्रोग्राम में, हालांकि अगर आपको याद होगा कि 23 तारीख को बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई थी, लाइफ वाज डिस्टर्बेड, तो लेकिन इमीडिएटली हमारी टीम ने हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के इजाज़त से और उनके हुक्म से इसको ऑनलाइन कर दिया। और मुझे खुशी होती है कि ऑनलाइन में भी 100 से ऊपर, हालांकि उस दिन कश्मीर में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम रही, बिजली की भी प्रॉब्लम रही, 100 से ऊपर लोगों ने उसमें शिरकत की। और जो 23 तारीख का हमारा प्रोग्राम रहा, उसमें एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस का मौजू था, का थीम था, जिसमें डीन फैकल्टी बराए इल्म हैवान मरकजी जामिया बराए कश्मीर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे मारूफ माहिर नबातात और साबिक़ रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़फ़र अहमद ऋषि साहब, कश्मीर यूनिवर्सिटी के इत्तलाती टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मारूफ कादरी साहब, और डीन बराए मटीरियल और केमिकल साइंसेज मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर वली मोहम्मद शाह साहब ने अपने मकाले पढ़े। और इस मजलिस की सदारत मारूफ कीमियाई और डीन फैकल्टी ऑफ साइंस इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद अकबर फारूक साहब ने अंजाम दी। और चारों जितने भी वहाँ मकाले पढ़े गए कि हिस्ट्री ऑफ साइंस इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया, कि पिछले 75 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स इस फील्ड में हुई। इसके बाद तीसरे रोज
का इनेकाद मौसमी सूरत हाल में कुछ बेहतरी के बाद इस जगह पर मुनक़द की गई। तीसरे रोज की तकरीब में सदारत के फ़राइज़ प्रोफेसर फारूक अहमद मसूदी साहब डीन एकेडमिक अफेयर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अंजाम दी और इस नशस्त में जिन साहिबान ने अपने मकाले पढ़े उनमें कश्मीर के मरकजी जामिया कश्मीर के रजिस्ट्रार मारूफ हयात दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल दरगर साहब ने अपना मकाला पढ़ा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़रिए साइंसदान शालीमार के डॉक्टर ज़हूर अहमद डार साहब ने अपना मकाला पेश किया और उन्होंने किस तरह से हमें ये बताया कि सुकास्ट की जो कंट्रीब्यूशन है इन एग्रीकल्चरल साइंसेज कश्मीर में उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं इतना यहाँ क्योंकि वाइस चांसलर साहब तशरीफ फरमा है कि साहब आज तक शायद इस महफिल में बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं था कि शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस दर्जे की यूनिवर्सिटी है और इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये हम सब के सामने लाया गया है और ये हमारे लिए इस बात का भी अंदेशा है देता है कि हमारे लिए साइंस कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट बन गया है कि हम काम कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरीज में लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हम कितना काम कर रहे हैं। मुझे इशारा दिया जा रहा है कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है लेकिन मैं जल्दी जल्दी से बताऊं कि चौथे दिन, पांचवें दिन, चौथे और छठे दिन भी यहाँ मकाले पढ़े गए जिसमें हमने साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इनोवेटर्स की बात की। और लास्ट का सेशन जो था कल संडे के बावजूद ये हाल जो साइड में है खचाखच भरा हुआ था, हमने नेक्स्ट 25 ईयर्स की बात की जिसमें हमारे एजाजुल हक साहब ने अपना मकाला पढ़ा, मारूफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशरफ गनाई साहब ने अपना मकाला पढ़ा, गिलानी साहब ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात की और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर डॉक्टर मंजूर साहब ने अपना मकाला पढ़ा। और कल भी यहाँ पर बारूनक मजलिस हुई। इसके साथ साथ पूरे 7 दिन यहाँ पर फिल्म स्क्रीनिंग की गई जिसमें EMRC कश्मीर यूनिवर्सिटी की फिल्में भी दिखाई गई और जो बाकी लोग हैं बाहर फूड टेक्नोलॉजी की एक फिल्म भी दिखाई गई, विज्ञान प्रसार की भेजी हुई कुछ फिल्में उनकी भी जहाँ दिखाया गया और उन फिल्मों में उसके बाद डिस्कशन भी हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन प्रोड्यूसर हजरात का, खासकर EMRC के शफकत हबीब साहब का, तारिक अब्दुल्ला साहब का, जलालुद्दीन साहब का जो खुद यहाँ रहे और अब्दुल रशीद साहब का, और उन्होंने जो लोग यहाँ उस वक्त मौजूद थे फिल्म देखने के लिए उनके साथ एक अच्छा साइंटिफिक डिस्कशन किया। तो इन्हीं अल्फाज के साथ जो यहाँ पर एक माहौल बन गया पिछले 7 दिनों में वो खुशाइन था और इसीलिए जो शेर मैंने शुरू में कहा था वो बराबर फिट आ रहा है क्योंकि जो चीजें हमें यहाँ देखने को मिली, सुनने को मिली, उससे यही लगता है ये कायनात भी ना तमाम है शायद कि आ रही है तमादम सदाई कुन फयकून। इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद सामईन और सफ़े सदारत में तशरीफ फरमा मौजूद हाजरीन, मैं आप सबका अपने दिल की अमीर गहराइयों से कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से और विज्ञान प्रसार की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आज हमारी खुशबख्ती की दिलकशनगीनों से आज ये महफिल सजी हुई है। इनकी ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा दानिश्वरों की खुशामदीद के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी फारूक अहमद शाह साहब को, रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर की, वो महराजुद्दीन मीर साहब फॉर्मर VC सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब को जो VC स्कॉस्ट कश्मीर, उनको गुलदस्ता पेश करें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। Please, big round of applause. अब मैं डॉक्टर शाहिद रसूल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो रईस जामिया प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब को गुलदस्ता पेश करें। तालियों के संग खुशामदीद किया जाए। थैंक यू। शाहिद रसूल साहब, आपसे मजीद दरख्वास्त है कि आप प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब रजिस्ट्रार मरकजी जामिया कश्मीर और डॉक्टर निसार मगमीर रजिस्ट्रार जामिया कश्मीर को गुलदस्ता पेश करें।
अब मैं रईस जामिया फारूक अहमद शाह साहब को दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब को गुलदस्ता पेश करें। Please, big round of applause. Thank you. Thank you, sir. Thank you. नाज़रीन और हाज़रीन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मुझे गुलजार साहब की एक नज्म याद आ रही है जिसका उन्वान है किताबें। नज्म के चंद इब्तिदाई शेर आपकी समातों के हवाले करना चाहूंगी कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। कितने खूबसूरत लम्हात हैं कि इस मजलिस में डॉक्टर मोहम्मद शफी खान साहब की किताब की रस्म रुनुमाई अंजाम दी जाएगी। मैं शाहनशी पर तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ दानिश्वरों से मुल्तमिस हूँ कि वो डॉक्टर मोहम्मद शफी खान साहब की किताब एन इंट्रोडक्शन टू कॉस्मोलॉजी की रस्म रुनुमाई अंजाम दे। और मैं दरख्वास्त करती हूँ डॉक्टर खान साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। सर बहुत बहुत मुबारक। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद शफी खान साहब से दरख्वास्त करती हूँ, उनको मैं दावत देना चाहूंगी डेस्क पे कि अपनी किताब के बारे में चंद फिल्मात पेश करें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर मोहम्मद शफी खान। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor, Central University of Kashmir, Professor Farooq Ahmad, Honorable Vice Chancellor, Sher-e Kashmir University of Agriculture, Sciences and Technology, Professor Nazir Ahmad Ganai, former Vice Chancellor, Central University of Kashmir, Professor Dr. Mirajuddin Saab, Registrar, Central University, Professor Dr. Afzal Zargar Saab, Registrar, Kashmir University, Professor Dr. Nisar Ahmed, organizer of this event, Science Popularization Program, Professor Dr. Shahid Rasool, dear colleagues, participants and students, Assalamu alaikum. अगर कजेरू है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा. Dear participants, I have been writing this book, An Introduction to Cosmology, for the last 4 years. There are 9 chapters in this book. 8 are on scientific interpretation of the creation of the universe and its possible end. And 1 chapter, I have added a unique chapter, religious interpretation of the creation of the universe. I have studied Holy Quran for 3.5 years. The cosmological events reported by Holy Quran, I have grasped them. I have consulted the Islamic scholars within and outside the country. And when I studied the Holy Quran, I compared it with scientific interpretation. And I have got some interesting results, which I will present before the audience. Due to paucity of time, I will not divulge into details, just what I have got by comparing the Quranic interpretation and the scientific interpretation, I will discuss it here. In the Holy Quran, the Almighty Allah says, we created the heavens and the earth and all between them in 6 days, nor did any sense of weariness touch us. Chapter 50, verse 38. Again in chapter 10, verse 3.
And again in chapter 7, verse 54, the Holy Quran says these lines. The angels and the spirit ascend up to him in a day, the measure whereof is 50,000 years. Chapter 70, verse 4. So that God created the universe in 6 days, and one day in divine timing is 50,000 years. If we multiply 50,000 years by 6, the result is 3 lakh years. And let's go to the scientific interpretation. The modern cosmological interpretation is that the universe started from a big explosion called Big Bang, some 13.7 billion years ago. Initially, it was radiation dominated. Then by a process called pair production, the heavy particles began to produce. And after a microsecond, there was quark-gluon plasma. The quarks and gluons and electrons were freely moving. But the universe was intensely hot, intensely dense, and its pressure was infinitely large. With the passage of time, the universe expanded and temperature dropped. The quarks combined together to form protons and neutrons. And when the temperature further dropped, the protons and neutrons combined to form, the quarks combined to form protons, and protons and neutrons combined to form the nuclei. And when the temperature further dropped, the electrons combined with the nuclei to form neutral atoms. And this happened exactly after 3 lakh years. And we know the neutral atoms are transparent to the visible light. So universe became transparent after 3 lakh years from the Big Bang. And here the Quran says, I have created the world in 6 days, 6 multiplied by 50,000 is 3 lakh years. So the Quranic interpretation and the religious and the scientific interpretation both are on the same page. The universe was created in 3 lakh years. According to scientific interpretation, it became transparent after 3 lakh years. And God created the world in 3 lakh years. One more, the result I have got. In Quran, chapter 36, verse 38, the God says, and the sun runs into a resting place for him, that is the decree of him, the exalted and might, the all-knowing. And in chapter 55, verse 5, the Quran says, the sun and the moon follow courses exactly computed. It became clear in 1980s that our galaxy Milky Way, it belongs to a local group of galaxies. With the local group has 28 galaxies. So in 1980s, it was found that the whole local group of 28 galaxies, including our Milky Way, including our solar system, including we also, are moving towards a huge invisible mass. The mass has not been visible, it has not been detected, but its gravitational pull is felt. This invisible mass is called Great Attractor. And whole solar system and whole group of local galaxies is moving towards this great attractor at a huge speed of 600 kilometers per second. So the Quranic interpretation that sun is moving onto a resting place, and the scientific interpretation that the local group, including our galaxy and including our Earth and solar system, they are all moving towards the great attractor at a huge speed of 600 kilometers per second. Some physicists tell us that it may be a doomsday for the Earth, because when the Earth will strike that great attractor, the population may vanish here. As we say, climate change is the doomsday, or an asteroid may collide with the Earth. So this is one of those doomsday events. So both the Quranic interpretation and the scientific interpretation tell us the same thing, that sun, including our solar system, is moving very fast towards the great attractor, the invisible mass. We have one result, but just one result, I will tell you more. The Quran says in chapter 23, verse 17, and we have made above you 7 tracks, and we are never mindful of our creation. Again, the same verse, chapter 67, verse 3, he who created 7 heavens, one above the earth. You cannot detect a loophole in the creation of the most merciful God. Turn your vision once more and see whether there is any flaw anywhere. Turn your vision yet another time. It will surely come back to you, worn out and dismayed. Now, the scientific interpretation is this. The whole universe is containing almost 100 billion galaxies.
and each galaxy is containing almost 100 billion stars. So the Quran says, I have decked the lower heaven. There are 7 heavens, and I have decked the lower heaven with lamps. That means stars. So according to the interpretation, wherever there are stars in the world, wherever there are stars in the universe, that is one heaven. So this gives us an idea of 7 heavens means parallel universes. And latest research, the superstring theory predicts the existence of parallel universes. And also Stephen Hawking's last research paper before his death in May 1980 also hints towards the existence of parallel universes. I have to talk something more, but because of paucity of time, I am concluding here. शाहिद साहब ने जो वो एक शेर पढ़ा था, मैं इसको फिर बोलूंगा, ये कायनात ना तमाम है अभी, क्या आ रही है सदा कुन फैको. Thank you very much. Thank you for patience. Thank you so much. Thank you. न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो. जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे साथ मारूफ मुंतजिम और जामिया कश्मीर के मौजूदा रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब तशरीफ फरमा हैं. मैं आपसे अदबन मुल्तमिस हूँ कि आप इस मेले की इख्तितामी तकरीब के हवाले से अपनी इख्तिताई कलिमात से हमें नवाजें. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब. मोहतरम प्रोफेसर मेराजुद्दीन साहब, हमारे एक्स वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, प्रोफेसर शाह साहब, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर, हमारे मेरे हम वतन और भाई, हम वतन हम प्रोफेसर नज़ीर साहब, प्रोफेसर और वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर, प्रोफेसर अफजल साहब, हमारे रजिस्ट्रार कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, प्रोफेसर शाहिद साहब, प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, हमारे सामीन में बैठे हुए मेरे, फिर मैं नहीं कहूँगा, प्रोफेसर मीर साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर साहिबान, हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के टीचर्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. मैं पहले समरीन जो हमारी यहाँ आज एंकर है, मैं उनसे भी इस्तदा करता हूँ क्योंकि उनकी उर्दू तो उसमें कोई, मैं उर्दू तो इनकी स्ट्रांग है ही, मगर वो तो एक्सपर्ट है कश्मीरी की. अब यहाँ स्कोप की बात चली तो मैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि वो, क्योंकि उनकी मीठी ज़बान उर्दू भी है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँ बीच में वो कभी कश्मीरी भी बोला करें. मैं सर ऑलरेडी मैंने इनॉग्रल पर 1-2 बातें कही थी, मैं आज नहीं दोहराऊंगा. आज मैं सर इतना कहूँगा कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि साइंस की जो पॉपुलराइजेशन एक्स्ट्रा, तो हमें सबको पता है कि साइंस, तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम सब समझते हैं कि ये ज़्यादा वेस्ट एंड यूरोप ही ने इस पर ज़्यादा काम किया है. तो आज की जो हम इसमें उर्दू और अंग्रेज कश्मीरी की बात कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा कि उर्दू और कश्मीरी भी मेरे लिए तो सख्त ज़बान है, कुछ वर्ड्स तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है समझना, तो मगर ये भी एक फैक्ट है, उसका मैंने जिक्र किया कि उसमें वो अल्फाज माने का अगर वो प्रोविजन हो. और आज मैं दूसरी बात की तरफ आपका रुझान देना चाहता हूँ कि जो हम पॉपुलराइज करें, जो हम लोगों तक पहुँचाएं. कभी हम ऐसा करते हैं कि जो पर्टिकुलरली साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं तो वो हम आगे लोगों तक क्योंकि सोशल मीडिया भी आज बड़े जोरों पर है, कुछ ऐसे तरीके पर पहुंचाते हैं इन डिस्टॉर्टेड वे किसी भी ज़बान में, तो वो एक वबाल बन जाता है. वो भी एक मेरी रिक्वेस्ट होगी आज सबसे कि वो पॉपुलराइज बड़े ध्यान से करें. एक और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हमारे वी साहब को आना था, ही इज आउट ऑफ स्टेशन, वो दिल्ली में आज है, तो एक हमारा एक नेचुरल एक जो हमारा एडवांटेज है कश्मीर यूनिवर्सिटी का,
इस एरिया का रादर कि it is as good as a hub of educational activities and educational institutions, excluding IUST, which is slightly far off from here. हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी तो है ही यहाँ, NIT तो हमारा नेबरहुड में है, सुकास्ट भी है यूनिवर्सिटी, और हमारी सिकम्स भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो हमारे नज़दीक ही पड़ती है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा एरिया है, इट इज़ अ हब ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़। तो मेरी इस्तदा है पर्टिकुलरली टू वाइस चांसलर साहिबान से, क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी में एज ऑन डेट हमारा एक फोरम है जो एक वाइस चांसलर्स फोरम के नाम से जाना जाता है। तो विज्ञान प्रसाद का मैं एक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है टू अस टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर आपस में कोलैबोरेट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हमने तो ज़्यादा नहीं किया हमारे कश्मीरी और उर्दू के, क्योंकि हमारा भी आज फुकदान है आप फैकल्टी इन बोथ इन उर्दू एंड कश्मीरी, तो वो है ही हमारे पास। बट विज्ञान प्रसाद हैज गिवन, आई एम थैंकफुल टू देम that they have given us an opportunity to collaborate and to coordinate with each other. तो मुझे लगता है कि अगर हम आगे हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सुकास्ट, NIT एंड अदर, क्योंकि आजकल ज़माना है ही इंटरडिसिप्लिनरी ज़माना है ही, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने वाइस चांसलर साहिबान से जो आगे फोरम में है ये भी बात करें कि हम या कोई मॉडलिटीज़ वर्कआउट करें कि ये यूनिवर्सिटियाँ आपस में एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स। आज तो ये भाई मैं कहता हूँ कि विज्ञान प्रसाद की वजह से ये आज ये हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपस में भी हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे आगे। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी अंडर द एजिस अंडर द डायरेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत साहब, हम हमेशा चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हम हमेशा अपने दरवाजे तो खुले ही रखते हैं, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमारे भी जितने भी हमारे एसेट्स एंड फैसिलिटीज हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू पुट देम फॉर यूज टू अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, दैट इज नॉट द इशू। इसी तरह से हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में एक हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक सेटअप लिया कि उन्होंने एक सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, जो उन्होंने एक हमारे एक लैब हमारी सेंट्रल फैसिलिटीज क्रिएट की, तो उसमें हमने ऑलरेडी प्रोविजन रखा है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं। मतलब एक अभी हमारा एक परचेज हो रहा है, एक इक्विपमेंट हमारा परचेज हो रहा है, वो 6.5 करोड़ का इक्विपमेंट है, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ। इसी तरह से बड़े बड़े इक्विपमेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक्सचेंज अपने स्कॉलर्स अगर स्टूडेंट्स से किया करेंगे। बाकी जितना भी हम हो सके कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी हमसे होगा वो हम कर सकते हैं। मैं अपने प्रोफेसर खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो आज किताब यहाँ जिसकी आज यहाँ रस्म रोनमा हुई, तो मैं उनको भी ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे स्कॉलर हैं, मेरे साथ रहे भी हैं स्कॉलर्स हॉस्टल, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं जैसे शाहिद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो 7 दिन का फेस्टिवल किया। मैं भी 2-3 बार यहाँ आया। नॉर्मली फेस्टिवल्स जैसे शाहिद साहब ने ही कहा कि हम फेस्टिवल्स में वी गो ऑन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो वो चलती रहती हैं, मगर नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे 7 दिन का फेस्टिवल तो बड़ा फेस्टिवल है, और यहाँ हमारे मौसम भी थोड़ा ख़राब ही था, मगर जब मैंने यहाँ देखा, मैं 2-3 बार यहाँ आया, तो इट वाज वाइब्रेंट फेस्टिवल। तो मैं उसके लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और शाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो हर दिल में मोहब्बत ये मुमकिन नहीं, हर सीप की आगोश में गौहर नहीं होता। हर सीप की आगोश में तो नहीं होता, लेकिन इस महफिल की आगोश में गौहर मौजूद जरूर है, जो मारूफ ज़रूरी साइंसदान के साथ साथ शेर कश्मीर ज़रूरी दानिशगाह शालीमार के रईसी जामिया भी है। मेरी मुराद है प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब से। चूंकि इनको निकलना है, इनको 2 बजे एक और मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं फौरक अहमद शाह साहब जो रईसी जामिया मरकजी जामिया कश्मीर से इस्तदा करती हूँ कि उनको शालपोशी और मोमेंटो पेश किया जाए। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।
Yes, sir. Yes, sir. Sir, I will take over, no? I will take over. अब मैं प्रोफेसर नसीर अहमद गनाई साहब से इस्तदा करती हूँ कि वो डेस्क पे तशरीफ लाए और इख्तितामी खुतबे से हम सबको नवाजें। तो जोरदार तालियों के साथ उनका खैर मकदम किया जाए। मुअज़्ज़ज़ व काबिल एहतराम और हमारे इस महफिल के सीनियर कलीग प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के जो फार्मर वाइस चांसलर रहे हैं, रईस जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जनाब डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर जरगर साहब, जिनका हमारे साथ काफ़ी क्लोज वाबस्ता है यूनिवर्सिटी के साथ में, इस सारे प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शफी खान साहब, जिनकी अभी अभी उनकी लिखी हुई किताब का यहाँ पे इजरा हुआ, लर्न फैकल्टी जो हमारे सामने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यानी मैं चार्ज संबोल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर तानी कर मैं कोशिश बकर कशर पे हेच बह कत कर अक्सर कोशिश करान पन्न महफिल कोशिश करान शायद बकर ये चूंकि स्को प्रोग्राम प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब चलावान अत मज शायद यह फोकस कि यम सान लोकल जबान मज गो पन्न बचन हुंद ध्यान तो रुझान साइंस कुन अन खतर कोशिश करें। अगर मैं तक पूरे कशर कर कहें मगर यम पत बच्चे बिहित हिम्मत दिन खतर कर बह कोशिश कशर पे कर। तो गो कर बह सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद रसूल सबस मुबारक बे यूनिवर्सिटी मुबारक कश्मीर यूनिवर्सिटी यमो इकवट रलित एक बड़िस प्रोग्राम्स पे हम करान कि सानि कशीर मज कित करो पन्न बच्चन हुंद ध्यान साइंस या बाकियन मजामीन हुंद पन्न लोकल जबान यथ वनो कशर या उर्दू जबान तम खुद छो तुम मेन तरफ सठा सठा मुबारक। अगर वो सात इंसान अल्लाह ताला इंसान तखलीक कर पे तमो फरिश्तन सत दोपे हे अस नौ मखलूक जमीन पे पैदा करें, तो शायद यम फरिश्त तमो करो गो एतराज दपस हे यह कुछ अनहन जमीन पे जमीन पे सिर्फ फसाद योत बर्पा कर यह ठीक कह मगर अल्लाह ताला वोन फरिश्तन दोपन मे नौ मखलूक दुनिया मज अन वजूदस मज अन अमिस तुह अलाव ब्या खास कह कि अमिस सोच समझ तो बे अमिस इल्म दितमुत तो अमिस सोच तो समझ तम इल्म सनो अल्लाह ताला इंसान अशरफुल मखलूकात अमिस वनो। तो ये वन प्रोफेसर साहब वन कॉस्मोलॉजी मुतलिक अल्लाह ताला यम सात सूचमुत ये दुनिया आनन बह ये बारसस मज तमि पत बेंद ब्या फरिश्ता यम ज्यादा पहन रिवोल्ट गो दोपन हे अगर यह मेच तो बहुत नारस गोमुत पत लिहाजा कर हेको न बराबर कहीं अल्लाह ताला क्या कोर पे तिमन सत वोन तिमन हे तुम नीरू ये मगर पे रूद मुसलसल कशमकश अमिस इंसानस अकि तरफ अमिस अल्लाह ताला इल्म दितमुत स सोच तो स फहम दितमस तो बे तरफ अमिस डालने खतर वो ब्या फरिश्ता शैतान अमिस अम नश डालने तो अम इंसान दित यह साबित कर कि अल्लाह ताला तिमन फरिश्तन वोनमुत कि यह सह मखलूक यमिस मज विजडम नॉलेज इल्म सोच
अमे इल्म सहित अमे नॉलेज सहित अमे सोच सहित कर इंसान अल्लाह ताला जमीन पर डिस्कवर अल्लाह ताला तम कह शक्ल तम कह मुजस्सम तम कह मगर इंसान यम सात जमीन पे ओन तम कोर जमीन पे कायनात पे अल्लाह ताला डिस्कवर इन humans they discovered God is truth Allah Ta'ala knows इंसान अन्न ब्रोट जमीन अन्न ब्रोट तम तमाम खजाना तम थमित जमीन में छुपाइत या इंसान सुन जिन वजूद सह तम थोमुत इत छुपाइत तहदन जिस्मस मज अत सेल मज यस लकट सेल यस हको आम अशो सत वुचित कहीं यथ माइक्रोमीटर या नैनोमीटर मज यमुक साइज तमिक न्यूक्लियस मज तुहद जीनोम तुहद लाइफ हिस्ट्री थमज साइंस वनान दपान यस सीक्रेट ऑफ लाइफ सेल मज छुपाइत थोमुत अगर डिकोड करो यह कोर साइंस डिकोड कर अगर बेहमो लेखने अत लगन कम से कम 50,000 किताब 50,000 it would require 50,000 books to write down the code of life which the God has put into this small cell, one single cell which is the nanometers. Then इंसान वो दुबने अगर अल्लाह ताला ये सब बड़ कायनात करने से पहले तो सारी का बड़ मिस्ट्री इस खुद वारिया मिस्ट्री अल्लाह ताला मन एक मिस्ट्री से खुदा सब ये कि ये ज़ुरियात है दुनिया में ये स्पीशीज ये वैरायटी तिमन वैरायटी सारी वैरायटी जन वजूद सह बस वारिया कम वजूद अत DNA मज 2-3-4 चीज टोटल तिमन वन साइंस मज नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन गवानिन साइटोसिन बासान पत्किन सन शागिर्द पत खनित या स्कॉलरशिप तिमन पाई एडेनिन साइटोसिन गवानिन सोरे चीज तिम येमि सहित अल्लाह ताला इन जमीन पे तमाम ज़ुरियात डाइवर्सिटी क्रिएट कर वुचान कि सह वायरस जन अशो सकान वुचित कहीं या सह एलिफेंट या सह वेल या सह कह कुल कुट यह जन अमिच बुनियाद अमिस सारे जून हिस्ट्री सह सेल मज तो सोरन चीजन हज बन तो इंसान कोर पे अकल हूं इस्तेमाल तम राज थोमुत छुपत सेल मज सह ओन तम अत नबर कड़ तह पाई कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यह जन 1999 मज भारत आव सह आज तक दुनिया में सारे बोड़ प्रोजेक्ट रूदमुत तम सात अमेरिका मज प्रोजेक्ट आव शायद वारियों लूको कर अपोजिशन दोपक अमे क्या फायदे यी इंसानियत मगर आज वुचान यह जन रात कोविड जबरदस्त तहलक मचो तथ तोड़ आव सह तोड़ तमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तमिच डिस्कवरीज पत ये सात सो RNA वायरस वन प्रोटेक्शन मीज यह सह इंसानी सोच हालांकि ये सात इंसान दुनिया मज आव वारिया शुरुआत तम डिस्कवरीज एक्सीडेंटल डिस्कवरीज फर्ज करो तमिस पाई कि सो वंडरिंग इंसान तमिस पाई बह कथ कुछ जाए सेटल डाउन तमिस पाई मे कथ क्या कर पे ये सात कन पे खनित त्रो तमिस गो शार्प एजड प्रोजेक्ट पैदा शार्प एजड वेपन तम शिकार कर तम पे गो तमिस एक्सीडेंटली नार इजहार तम त्रो कन पे कन बन कन थोस गास तथ लोग नार तमिस बासो कह नार अत क्या फायद बह गर्मी कर पानस बह जन बे जानवर मर्द जानवर या जिंद जानवर कुची खेवान शायद कि बह अमिस क्या कर पे बासो अमिस इंसान दोपन हे बस वन अकि जाय पे बे जाय यह आवार इंसान नोमैड टाइप पे मे फैमिली बन पे अकि जाय पे बे जाय गन अम वो मे जरूरत कुछ चीज बह बे जाय पे गई डिस्कवरी ऑफ ईयर बस क्विकली वनान यम क्या एक्सीडेंटल डिस्कवरीज मगर अम पे बासो चूंकि अल्लाह ताला हिकमत फिक्र दिसम अम दोपन नसा वन क्रिएटिव माइंड अल्लाह ताला अम दोपन व्हील एक्सीडेंटल डिस्कवरी गई पे टाइम पे दोपन अत अगर एक्सल सो व्हीलस एक्सल कि शायद बह ज्यादा तम काम कर पे पाई कि पे गई तम रिवोल्यूशन दुनिया में स्टार्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वन सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गो अमे व्हील सती पे व्हीलस एक्सल लगे पे थोड़ा सा स्टीम इंजन बन गो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लंदनस में चालू योताम अमे ब्रो ताम इंसान मशीयत दारमदार सिर्फ ज्यादा पहन एग्रीकल्चर पे सह हेतुन पे इंडस्ट्रीज कुन तब्दील पे पाई पे आव दोम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन योताम स्टीम इंजन वन आव इंटरनल कंबशन इंजन ये जन ऑयल गैस तो बाकी इस्तेमाल गसान अमे खतर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2 पे आव थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी आई मगर बदकिस्मती सान ये सन वजह कन रूदम सारी रिवोल्यूशन अस नश दूर
बोन अख लकट मिसाल कि अख लकट सितन यस आम रोजान इस्तेमाल करान तक लकट आई आसान तथ पे अकिस नफरस पेटेंट मिलम सो सितन ताम वन मे बासान नबर पे आना मोज तो बेम बनियान बनावन शायद वन तम अथो सती करान वन सह अथ लेवलस पे वत करा गो गोडनिक 3 रेवोल्यूशन जो पहले 3 रेवोल्यूशन थे अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दोस 3 रेवोल्यूशंस हैव स्टेड आउट ऑफ आवर शोर्स वनकस गुजरान सूरमी रेवोल्यूशन ये वन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 मगर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 मज नो अख तरीका सह गो ये मज बजे बजे हैवी मशीनरी तो रॉ मटीरियल हिंदुस्तान पे ट्रांसपोर्ट कर पे वापस फिनिश प्रोडक्ट हिंदुस्तान या बाकी दुनिया मुल्कन मज सोजन कहीं यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सिर्फ यह सोन ह्यूमन इंटेलेक्ट सोन जहनी ताकत अमुक नतीज सह गो ये रेवोल्यूशनस मज वनकस ड्राइविंग फोर्स सह वन तुम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रोबोटिक्स 3D प्रिंटिंग तो बे ब्या टर्म ये वन बायो इकोनॉमी गो वनकस बहुत पे पत स्कॉलर बिहित जोर दिवान कि बड़ जरूरत अमिक अथीज कि पन्निस तलीमी सिस्टमस मज कथ अनो सुधार ये सह बनाओ पन तलीम तो पन रुझान बनाओ टुवर्ड्स क्रिएटिविटी इनोवेशन तो मे अमिक अथीज खुशी ब्रो ये इजहार कर गसान कि सन यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शायद तम बूजमुत कि हिंदुस्तान में ये कम से कम 74 यूनिवर्सिटी देयर आर सम 74 यूनिवर्सिटीज like our universities, and we stand as the 6th best university in the country. Ministry of Education, Government of India, universities ranking on the basis of the innovations and the creativity. That's one is Atal Innovation Ranking. That Atal Innovation Ranking must participate as 365 universities that shumulat karmas participate innovation ranking must. तो तथ रैंकिंग मज सन यूनिवर्सिटी दर्जा यथ वन बैंड एक्सलेंट दर्ज तो बेसिकली अत वजह पत्किन यह कि पत्मो कैंसो वरियो पे लजिस यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मज अमे ब्रो 3 वरी ब्रो पे यूनिवर्सिटी मज पन्निस तलीमी सिस्टमस मज सुधार नयर अन कोशिश कर before beginning of this national education policy. I was in fact running a program, what's called as National Agricultural Higher Education Program. In the year 2017, I started the program. The mission I have was खुशी गसान ये साथ सानी यूनिवर्सिटी पानो ना concept note लियो National Agricultural Higher Education Program. So सूज ICRN Indian Council of Agricultural Research ये जन governing body. तिमो सूज project सारी project evaluate करने खातिर basically it was being supported by World Bank. World Bank was loan दिवान तिमो सूज अमेरिकन एक्सपर्ट इन सारी concept note. तिमन concept note आई थोड़े remark. तथ remark इस मज़ावी युस Scotch Kashmir vision of education for India. It could be a model education system for India, and they rated all the concept notes which were submitted to the by the government of India to the experts in the USA. And it went to 2 experts. One expert gave us a score of 9 out of 10, and the other expert gave us a score of 10 out of 10. मुझे और जो बनाने वाले थे उस कॉन्सेप्ट को तिमचुताही मज आपके ही जैसे वहां पे भाई बहन है वहां पे जिन्होंने मेरी हेल्प करी है उस कॉन्सेप्ट को बनाने में. और इस वक्त जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे सारे हिंदुस्तान में जिसका बड़ा जबरदस्त चर्चा है कि भाई इस पॉलिसी को हम कैसे इंप्लीमेंट करें. मैं आपको बताऊं कि सारे हिंदुस्तान में इस वक्त डिबेट ये हो रहा है कि व्हाट इज दिस पॉलिसी. इस पॉलिसी को हम कैसे अपनाएं, कैसे आगे ले जाएंगे. बट दिस पॉलिसी इज इन एक्शन एट आवर यूनिवर्सिटी. हमारी यूनिवर्सिटी में इन एक्शन है. उसके मैं कुछ 2-3 बातें बता दूं आपको. जस्ट बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स एंड देयर आर सम फैकल्टी हियर एज वेल. हमने सबसे पहले जब हम अपनी पॉलिसी बना रहे थे, हाउ शुड वी शेप आवर एजुकेशन पॉलिसी, वी थॉट दैट the ultimate outcome of any educational system is the quality of the graduate which we are producing from our universities, the quality of the graduate. Then we were trying to understand how should our graduate look like. और हमें ये पता चला कि शायद जो हमारा existing system of education है वो उसको support नहीं करता है. Therefore we thought that we should bring some kind of very big changes into our education system.
पिछले 1 साल से हमने बहुत जबरदस्त जोर दिया बच्चों को इस बात पे कि अब वो जो रॉट लर्निंग है उसको छोड़ दे, वो आए क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चों के पास वी हैव बिल्ड एन आइडिया बैंक ऑफ ऑलमोस्ट 100 पोटेंशियल आइडियाज। और हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त कोई अपना बाहर का स्पॉन्सर्ड कोई इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है। इट इज अ वर्चुअल काइंड ऑफ अ सेंटर wherein we are incubating some more than 15 ideas, and out of those 15 ideas 4 students just like yours have already started their startups as private limited companies. और मुझे इस बात की खुशी है कि कल स्कॉश कश्मीर का पहला इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी हमने उसको लॉन्च किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है हमारी यूनिवर्सिटी का, और मेरे ख्याल में फॉर्मली हम उसको होने वाले किसान मेला में लॉन्च करेंगे। इस तरह से इस वक्त और हम इस साल के आखिर तक देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 10 private limited companies of our students which they would be establishing on the basis of their own innovations. तो ये आप बच्चों के लिए जो सामने बैठे हैं, जो आप स्कॉलर हैं, अब आप टाइम आ गया है कि वो पुराना तरीका हमने छोड़ना है, वो रॉट लर्निंग। जो कोविड आया और कोविड ने हमें समझाया कि एक टीचर की जो रेलेवेंस है वो बहुत बदल गई है। अब टीचर को एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम नहीं करना है। टीचर हैज टू प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, एज अ रोल ऑफ ए मेंटर। वो टीचर का काम है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारा आपके नेट पे अवेलेबल है। रहा सवाल हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च और एक्सटेंशन का, क्योंकि हमारी रिसर्च ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो जो अभी इन्होंने इसका इजरा किया एक तजस्सुस है और एक गाश है, तो मे बासान कि अमुक ज़्यादा एप्लीकेशन सानी यूनिवर्सिटी गसान कि अगर अस जमींदारन तमत वातन अच्छे करें कोशिश कि सह वातो जमींदारन पन टेक्नोलॉजी में डेवलप कर पे कशर जबान मज या उर्दू जबान मज। बहुत तुम अक लट मुबारक करान शाहिद रसूल साहब कि तुम करो अमिच शुरुआत कि मे बासान कि यम सात यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकेशन करान तम सात बड़ा दिक्कत गसान कि कशरस उर्दू कत कर तर्जुम। तो मे बासान अस गि सह प्रॉब्लम कह यम सात तम तम पब्लिकेशन बेसिकली मैं ओतर ज्वाइन कर, तब से मैंने ये सोचा है कि आसो मंथली न्यूज़ लेटर्स करान यथ मज कम से कम जमींदारन तम तम तमाम शच खबर आसो वातनावन। तो पत रूद यह कि यह गशवनी जबान मज। फिर मैं आई वाज जस्ट हंटिंग फॉर अ पर्सन हु वुड हेल्प अस टू ट्रांसलेट that English into a kind of a language which an ordinary farmer at a very normal farmer ही तो मैं तकवी एक्ट मुबारक इंशाल्लाह ताला we will work with you, और आपकी वजह से हमें भी काफ़ी इस बारे में सहायता होगी और फ़ायदा होगा। अकल तो बे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कश्मीर यूनिवर्सिटी बे अकल मुबारक करान, बे साइदीन तो यथ ऑर्गेनाइजर्स मुबारक करान कि आपने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आप इस मिशन को आगे ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर तुहन सठा शुक्रिया, चूंकि इन नेरुन इन 2 बजे मीटिंग अटेंड कर। सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। सिलसिल पकनाओ ब्रो वन दिम तिमन दावत यह शख्सियत न कुछ तारुफ मोहताज न कुछ तारीफन हंस। बस कत करान रजिस्ट्रार मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जहर सभी तिमन अदबन गुजारिश करान कि तिम NNDS पे तशरीफ तो पन तासुरात करें पेश। तो जोरदार चाहो प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जहर। जनाब जनाब प्रोफेसर मेहराजुद्दीन मीर साहब, the former Honorable Vice Chancellor Central University of Kashmir, Janab Professor Nazir Ahmed Ganai Sahab, who has just left the hall, Honorable Vice Chancellor Squad Srinagar,
Janab Professor Farooq Ahmad Shah Sahab, the Honorable Vice Chancellor, Central University of Kashmir, Janab Dr. Nisar Ahmad Sahab, the Wardi Registrar, University of Kashmir, Janab Professor Shahid Rasool Sahab, the organizer of the program of this scope, my revered faculty from the Central University of Kashmir, from the University of Kashmir, from different colleges of the Valley, and above all, my dear research scholars, very good afternoon and assalamu alaikum to all of you. It's a difficult position for me because my worthy counterpart from the University of Kashmir, Dr. Nisar Sahab, spoke in Urdu, and the Honorable Vice Chancellor Squash spoke in Kashmiri, and it would be very difficult for me to speak in Kashmiri or Urdu because it's relatively, for us, it is difficult to gather the words. Anyhow, but I will continue to speak in English. Well, I must at the outset congratulate all the scholars who are present here for making this program, this 7-day-long science festival, a success. They all deserve kudos in the sense that they have made their presence on all the 7 days, despite heavy snowfall, despite COVID restrictions. They have made their presence, and this indicates actually the success of this program. I must add that I have to congratulate the organizers of the program for meticulously jotting down what is the requirement of the day and coming up with nice bit of presentations, nice interactions with the experts. I have had the privilege to be a part of these discussions for a couple of days also. And I must congratulate all the organizers, including Professor Shahid Rasool Sahab. Now we understand that this 7-day-long festival, it is being commemorated all across India under the banner of the scope and under the banner of Azadi Ka Mahotsav, 75 years of celebrations of the freedom, independence of India. I have been given to understand that it is being simultaneously conducted across 75 cities of India. And when I looked at the contributions made to the event from Central University of Kashmir, I think it was one of the best from my point of view, because I'm also from the field of science. I consider that it was one of the best. By looking at what has happened over these last 7 days, we have seen and that many presentations were made with respect to the annals or history of the development of the science. Because we understand we cannot think of the future unless and until we do not know about our past. Past becomes and lays the foundation for the future. And we have seen, we have gone through the historical perspectives of the development of the science, gone into the ancient civilizations, and slowly traded across and went into the modern fields of biology, modern fields of mathematics, modern fields of science and technology. Then not only there, we did not limit, this program was not limited to only what is happening currently in the field of science. Even some lectures were there, which was the scope of the science for future. Like what is the next 25 years? How can you reimagine the world of science, imagine the world of science in next 50 years, next 25 years, up to 2050. I was privileged to be a part of this lecture, which was given by my worthy colleague, Mr. Ejazul Haq Sahab, yesterday. Actually, so we have taken all the contours, past, present, as well as the future of science.
And we have been blessed, and we have come to know that science has contributed, science is contributing, and science is going to contribute also in the coming years. You know, once we look at it, what we see, and what we see as of now, many developments have taken place. In my inaugural address, on the inaugural day, in my address, I had just spoken about that small device of ICT, which is currently, everybody talks about it. The mobile technology, how it has revolutionized. Internet, how it has revolutionized. Some developments are like, all of us are directly connected with it, is the diagnostic imaging. That has revolutionized our healthcare system. We were not some years back getting to know about the diseases, getting to know about our interiors. Nowadays, the diagnostic imaging has dramatically changed. Now, we can take a small capsule, and that capsule will take the imaging, what is happening inside us. And it will be constantly monitoring our internal anatomy of the things so that we come to know where actually the problem lies. We have already heard about the importance of the artificial intelligence. You, as of now, think of anything. What we are seeing in YouTube's, we are seeing what will happen in the next 25 years. Something which we would be only imagining, that is expected to come through the developments in the artificial intelligence. Nowadays, the things are coming from these gadgets, guiding us how to do, what to do. Means, I say 10 saal pehle, we were not knowing about even the weather conditions. Aajkal hum jo hai, apni small gadgets mein weather conditions hum dekh lete hain, and we can accordingly make the program. This is the artificial intelligence which predicts the things. So predictions have become more cozy. Predictions have become more testifiable. What we have seen the biotechnological interventions happening, biotechnological growths happening, growth and development of the biotechnology happening. What Professor Nazir Saab was referring to is a number of biotechnological advances have made the agricultural produce enormously increased over the years. So what I understand is that you talk about anything, you think about anything, possibilities have been created by the science and technology. Right? So, but the ultimate goal is that with these positivities that we are talking about, there have been also the negativities, the minuses, the vices of these advances on technologies, which we have to look into. Because human civilizations can wipe off if we do not use these technologies in the right frame. What we are seeing over here as of date, Russia is threatening the Ukraine with the nuclear bomb. And if it happens, the half of the population of the globe will be terminated, exterminated. So this is again the advancement in the technology. So if we do not do it in the appropriate way, there is a possibility that it might be also leading to the bad and vices of these technologies. My understanding is that we have to create the scientific temper. We have to create curiosity in our young minds. They are our future. This curiosity is to be developed into these young minds through improving their scientific temper. Because if we improve our scientific temper, we will be able to know about the positives and negatives of the science. And we'll be able to also feel ourselves that we have to raise questions. Please, I make you an humble request, is that you have to be innovative, thoughtful, innovative kinds. You are the research scholars. You are the scholars of the future.
Please, whenever you see anything happening right and left around you, please get up and see to it. There has to be a reason for this. And when you will try to look out into the reasons, you will be coming out with solutions also. I will not take much of a time, and I understand that, Scope has done a wonderful job in a very small period of time. Professor Shahid Rasool Saab and his team have been at my head always to do one or the other kinds of the activities. And the present activity is also one such activity. And a line of the activities is listed for the month of March. So in only 4 months' time, 4 publications have come out. 4 and 4, 8 publications have come out. I must congratulate Shahid Rasool Saab and his team and our Honorable Vice Chancellor and former Honorable Vice Chancellor for, kicking us up so that these activities are taking on the larger pretext, on the larger. We expect that in future also we'll be contributing, and next time or next year when I will be speaking will be all of us, means speakers who are speaking, at least for the Scope, will be speaking in Kashmiri or Urdu. Thank you very much. सर तून सठा शुक्रिया। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहूंगी ऐसी पुरअज़म शख्सियत को जो न सिर्फ फ़आल दानिश्वर है बल्कि फ़आल शख्सियत की मालिक भी है। कदीम क़यीम सवाल हो वो वतन बढ़ाना ख्याल हो। कदीम क़यीम सवाल हो वो वतन बढ़ाना ख्याल हो। नजर करक युद एनायतिच नजर करक युद एनायतिच बुत्थी गसान छुस बहाल हो। शेखुल जामिया मरकजी जामिया कश्मीर फारूक अहमद शाह सबर जिंद अदबन दावत कर इस्तदा जितम अनन दैसिस पर तशरीफ ते करन पनन खुसूसी खुतब पेश जोरदार सरको। शुक्रिया डॉक्टर समदीन। मैंने खतर छु अख चैलेंज में ये कि ब कस जबान कर इस्तेमाल। So I'll try my best to be comprehensible to all of you in one way or the other. It would be a mixture of English, Urdu, Kashmiri. The कोशिश आकाश में या इस humble कोशिश में कि वो कर पंजन ख्यालात में इज़हार मादरी ज़बान मज़ीद। Anyways, युजन विज्ञान सर्वत्र पुजाते छु इशु स्कोप अख हिस्सा scope science communication popularization and its extension. In fact, I am reminded of 22nd of September 2021 यानी 5 रेत के दो ब्रो यिल्जन येमी सफरच शुरुआत सदी येमी हालत ये दो रोजा साइंस कांग्रेस नेशनल साइंस कांग्रेस मुनक्कद करना. It was a collaboration between Vigyan Prasad and the Central University of Kashmir as well as University of Kashmir. Ta empatai za yul yemi scope project yul out ami sat ravna. Empatai kya do maybe around 10-15 days. It was such a wonderful time being a part of this project that time also indirectly, because we had with us Professor Mirajuddin Mir as the former Vice Chancellor. Yumus Tamsatan as son Reis Jamia. तो यमो कर जबरदस्त कोशिश और यमोस कम वक्त के बाकी पन ऑफिस रावन तोताना यमो कर जबरदस्त कोशिश कि ये collaboration between Vigyan Prasad and Kashmir University and Central University on the one hand, and between Vigyan Prasad on the other hand, कि ये कोशिश बामलिन 15 वहन दोनों में सब जो ये इतना तरक्की आया हम इतना
तेजी सान गो ये कि वही दो बात कि ये प्रोजेक्ट आव वैसे तो ये सिर्फ कसान कोशिश ये निमो कर सीरियस हम्बल ऑनेस्ट कोशिश प्रोफेसर मेराजन मीर साहबन तो बे दयिम रोही रवान अमिस को प्रोजेक्ट प्रोफेसर शाहिद रसूल of course in collaboration with under the dynamic association from Professor Talat Ahmad sir, Vice Chancellor, the Bay Nisaran Mir sir, the Bay Muhammad Abdul Zargar sir. So ये कोशिश गई कामयाब तो 15 दोहन में मिले ये प्रोजेक्ट इसे एक्सपेक्ट करान अफ प्रोजेक्ट स्कोप इन उर्दू but we were asked to have this project in Kashmiri as well. तो तम पता कह दो पे कर कार्रवाई शुरू तो शाहिद रसूल सद कोश सब बनो मुमकिन कि आज तान सब 4 रेत 4 रेतन मज आए 4 न्यूज लेटर महानामा न्यूज लेटर तजस्सुस तो गाश यमन अवाम ब्रो कन तो साद कोशिश बट वेरी सिंसियर एंड हम्बल कोशिश कि रोजमर्रा की साइंसी साइंस मुतलिक सब्जेक्ट्स टॉपिक्स एरियाज गई सहल तो मादरी जबान मज लुकन तन वातन तो मे पूर वन बड़ खुशी सपदान कि सपदे कुन हदस तान अत मज कामयाब मगर अमिक सोरे श्रेय गसान सोरे गसान शाहिद रसूल सबस बे प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर साहब यम जन रोई रवान रूद अमिक कोलैबोरेशन. Anyway, I will come to this. I'll say a few words about this also. You see, when you talk of science popularization, this popularization and extension is not possible unless we inculcate a sense of scientific temper among the budding youth, and this is very important. Scientific culture, the scientific inquisitiveness. तलीब इल्मन मज लकटन जवानन बच्चन मज पैदा करने खतर जरूरी कि पर्नो साइंस कोशिश करो बेसिक साइंस पर्नो पन्ने लैंग्वेज मज बिकॉज यह वुचन आमुत कि चिल्ड्रन बाय नेचर बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनेट कैरेक्टर दे आर वेरी क्यूरियस इनिशियली युथु बच्चे 4-5 वोर बच्चे मदरी जबान मज बोल बोश कर कोशिश कर वन रूद क्या पे वन तारक क्या चमकान रोतली क्या दोहली चमकान गाड़ी कित पकान यह नलकस यह आब यह कत आव यम कोशिश करान इन इज ओन हम्बल वे कोशिश करान कि सवालात कर और करान तो रोजान K's times, and he starts trying to think about nature. He tries to think about the physical world. Magar yishu vishnu amut कि as and when he grows, the child grows, and since his curiosity and inquisitiveness is war kam gasan. Shayad amujub ke emishu basan pata yishu do dishu langriya tosmanch routine day to day. It's a casual process because we have never ever tried to encourage and promote his inquisitiveness. Waqtu watan ki kunsa chis wanan aam alfazan mazamis ये क्या रूद पे वन इस वक्त कुदरती ये शक आम अल्फाज़ रूद में ऐसी कुदरती ये कुदरती क्या को natural of course the natural process but there's a reason because science is basically issue it's an area it's a subject of reason logic rationale. And science demands questioning and it demands seeking answers to different questions, to various questions. Magar war cha emsundi rojan, ye questioning is a rojan cha attitude cha war kam gasan. Reason chu ke eche emsin yim question yim sawalat yim cha is war casual niwa. Pat chu yiti banan emis कस पे वन गंजनस गसान ये पत वार से इनक्यूजिटिवनेस curiosity वार कम गसान. And
as and when the child reaches into an adulthood, ish wushna amud ki emishna iman cheezn fikri pat roza. Good, that's the reason why we start stopping thinking about and asking questions. Reason show ki a gradual process a ishna emsindim sawalat im question imsan emsindim inquisitiveness ishna serious niwan kya waqt chu watan ki ish trawan sawal karun to ish trawan jawab to yutan es ye bedari karo ki ye continuity is ensure karo using emphasize continuity as questioning here so promote karo so encourage karo timan sawalan kin jawab nish koshish karo sainsi tor na ki won ki qudrati ak faila is reason dimon emis ki to promote karo ne yim bar yim question classes में teachers mentors peers yim question karne khadre to tan hekon is sainsi using inquisitiveness to scientific curiosity to scientific temper यह क्यों सुताम promote करित की अक अजीब चीज using which या मिक्सकार कन कुछ सुगमुत कि science actually we have put science at a very high pedestal यो खोक्यो बासनाम scary या ये पर साइंस इशू नेक्स्ट टू गुमत वाक क्योंकि मगर आज थोड़ा नहे चेंज गमत attitude has changed but when I remember when I was asked to take up a subject in 9th class because those days we were asked to choose our subjects our area in 9th class not in 11th like now we are doing right now युथी में subject choose उस करूं गरस में जिम जीचर्स आखिर was हालांकि उस डॉक्टर वो ना साइंस चुने में स्पॉट क्या है एमसी ने साइंस शायद समझ की गो यू खोक यूज़ ना स्पर्धोस करमुत ये चुनित वारियर साइंस इन सच चुने साइंस चुने एक आम फहम या आम यूज़न अक ये मिसन कॉमन ऐसा वनो इस कॉमन सेंस शे यूज़न ये मिसन वनो कॉमन ज़हनियत तो यूज़न बच्चों शो एमसन खतर सच उस साइंस शायद मौकूल सब्जेक्ट की क्या है साइंसेस गैसे आसन इंसान सु बच्चों सु ये मिसन IQ थोड़ पाए ये मिसन दिमाग थोड़े आए रीजन शुता वजह चु ये कि साइंस basically is an area of logic and reason it demands questioning and those questions demand answers which science is there to provide मगर ऐसे बात बरकस करमुत ऐसे science परनोमुत इतने have made it the embodiment of complex facts which is not basically true ऐसे science वोमुत यह सच्ची theory यह सच्ची scientific theory यह सच्ची scientific principle यम ची equations यम ची reactions यम इतने समझे कि you have to just go for rote learning ऐसे ये मुश्किल कि साइंस बेसिकली शुनु रॉट लाइनिंग खतर क्या बल्कि इशू रीजन लॉजिक सो रीजन तो लॉजिक इशनाओ है सिर्फ इंटरेक्शन से डिस्कशन से डाइसेंट से न कि will promote the students to mug up theories and these equations and these बाकी कीमियाई रिएक्शंस वगैरह तुम करना हो याद इशू बेसिक problem science na promote karne kya wanan ki yem such because basically what it is basically a body of reason and logic question achu jawab du achu sound wajah kya achu no wanuni qudrati ya such qudrati root pewan qudrati kya pe qudrati kya yashna spanas te pata yashna isi bachas samjhaun khatra tayar ki since ye un samajh ki waqt chu wata ki shu tas stage par wata एम छासां पाने वंगस ति करो मगर तंपो छ बसा कि शुन तास चीज पड़ के एमसी समझी go as to what we have to do basically is to not put it at a higher pedestal it's a very common pedestal because science chi rozmara tuta amal dakul chunu kuni subject kuni area of study tuta science chu subos vasre pe sham ke sangnas tan chu science involve falsafा शायद सरसी मज के
Baki olum chun sarsi timun amal dakun chun yuta ke yuta science luk amal dakun magar unfortunately chu aise eth banomut ki asa chu qudrati without ascribing any reason, any logic, without any trial to do it even. And that is why it can science hishnawan goes you asking this can change hishnawan the way science should have been taught. Yes, science should be taught. Because it is based on reason and logic, it needs lab. Not only those structured labs, in the formal labs. Tatishu, unfortunately, we have confined those labs in the four walls. Basically, the entire world, the entire universe is a lab. Our home is a lab. Our family is a lab. So, science demands teaching and learning practically, seeking answers by discussion, by engaging people, by engaging students. Not that giving them the equations that you just mug up these equations, that's all. You will pass the examination, that's all. So the basic essence of science teaching, we have just deviated and we need to modify that and make it more lab-oriented. And when you talk of lab, mind it, I don't mean lab by formal labs. The structured labs that we have built are in our universities, colleges, and schools. Every stage, every room is supposed to be. That's why, if someone is lucky to ask, you'll say Japan is much better. He's put in a room, given some toys, daily use things, some toys, some of them broken, some of them fine, and we leave it to him how he would fix up these things. He would fix those toys, broken toys, and all that. What is that? That is basically a lab, and there is how we try to inculcate that inquisitiveness and that curiosity among those students, among those young people who are aged 4, 5 years age, and it's basically where they start from. Lekin yuhi es bachsan adbarakas aschu persan bacha es sana qudrati. Ruta sa pewanch pewan qudrati. Because he seeks answers from us, and we are not ready to provide those answers. So that is why I tell that I suppose that we have to modify the way we teach students, and we have to demolish those structured walls that we have built up our labs. The other day I happened to attend a session from one of the experts for this school program, for this program, Science Festival, Professor Pavandar. He spoke so nicely, and one of the things he talked about that we have to create junk labs. Junk labs, junkyards has to be converted into labs. And he gave some examples that in MITs, in good institutions like MITs and all that, they ask their students, they let them go free for one complete semester of 6 months or 2 semesters for 1 year. And often this is the junkyard. You have to go and come out with a car, a functional car after 6 months. Come what may. I don't know what do you read about it there? What do you study? Which book do you consult? Which instruments you make use of? I don't care. You have to come out with a functional car after 6 months. And this is all what that group of students are asked to just build out of that junk that's there. So this is how science needs to be taught. Not that structured, formal, which are confined, within walls, those labs. And then this is what NEP has also advised, prescribed. Promotion of interdisciplinary approach. Gone are the days when you say that if you are a science student, you have to be science students only. You don't talk about philosophy, you don't talk about literature, you don't talk about poetry and all that. That's not true. And that's why NEP has mandated now that interdisciplinary approach is to be there. Because unless you have a human heart, you don't know what to look for, what to experiment for. And then, lastly, we have to just enhance
the public trust and public belief in science. Unfortunately, आजकल किस्मत होना साइंसदान वुचे किस्मत पचमे दोया वरियो पे ये COVID-19 मसला आत्मस ते वुचे के जान celebrated scientists were known across the world for their field of research and contribution, scientific contribution. कोई वायरस नहीं है, वो भी कह रहे थे, कुछ लोग हमने देखे, वो भी अमेरिका चाल, कुछ कह रहे थे नहीं यहाँ लोकल प्राइम मिनिस्टर की चाल। जैसे कि दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट्स, सो देयर आर पर्सनल दोस व्हाट कैन से biases are there, and unless and until the scientific thinking, scientific curiosity takes precedence over the personal biases, we cannot produce good scientists. Global warming च वंती क्या होना scientists, celebrated scientists, environmentalists. Ki in such it is not a man-made phenomenon. Absolutely no. It's a myth. The reason is that the public image of science, because of so many motivations, maybe political motivations, maybe personal motivations, they are advanced those theories. And they try to motivate people giving their own logic and reason. So unless the science takes precedence over personal likes, dislikes, priorities, preferences, we cannot inculcate that sense of curiosity and sense of inquisitiveness. With these words, I congratulate the organizers of this course. Of course, I am one of the host. And Mera Saab, jo hamare darmiyan hai, I still don't consider him as a guest, mind it. He is still with us as a host himself. Because contributions of Professor Meratin to the establishment and development of Central University will go recorded in all the annals of the Central University of Kashmir. The way he has tried to just bring it to Gandarbal against all odds and all that. And I have seen very closely, having worked with him for almost 10, 12 years, very, very closely. I have learned a lot from him. I tried to just carry along with some of his iota of those qualities. But I'm thankful to you for accepting our request and being with us this afternoon. I'm extremely thankful to all those people also who have been very, very, who have collaborated with us, including the University of Kashmir, Professor Talat Saab, Dr. Nisar Ahmed Mir Saab, for collaborating with us and hand-holding us, because ours is a very young university. We have to go a long way, even if we are struggling with our basic some primary issues. But one day or the other will come out with flying colors, inshallah. So I'm thankful to Professor Shahid Rasool Saab for so beautifully, because before 1.5 years, I never knew Shahid Rasool so closely. We had never worked together, but he's a man of such a great organizing skills, and he knows how to manage things. I really appreciate his caliber, and I look forward, because ever since we took over as the director of this scope project, he has done wonderfully contributed. And Professor Shahid Rasool and Central University of Kashmir is a family name at Vigyan Prasar, I can tell you for sure. So I thank you for taking all these pains. I thank my registrar, Professor Mohammad Abdul Zargar Saab, for coming all along the way and just seeing that this function, this week-long science festival is a great success. I congratulate all those people who have been somehow associated, and I thank all the people for being associated with this, including those young children and students. Thank you very much. सर तुम सेठा शुक्रिया वाइंकर विस्तदा रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर फारूक अहमद शाह सर जे तिम करन शाहनशीन इस पर तशरीफ फरमा
साबिक रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर सब शालपोशी तो बे करन तिमन मोमेंटो पेश तो जोरदार सर को पैम जोरदार तालियों के साथ प्लीज। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. And just intervention with the permission of the chair. Yes, sir. I just present this shawl to Shahid Saab along with the bouquet. अब मैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब से इस्तदा करती हूँ कि वो रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब को शालपोशी उनकी करें और उनको मोमेंटो पेश करें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। शाहिद रसूल साहब से इस्तदा करना चाहूंगी कि वो रजिस्ट्रार मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब को मोमेंटो पेश करे और उनकी शालपोशी करे। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द सेम। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर फारूक अहमद शाह सब इस्तदा करा जितिम करन रजिस्ट्रार जामिया कश्मीर डॉक्टर निसार अहमद मीर सबस शालपोशी ते बेकरन तिमन मोमेंटो पे जोरदार सर को। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर जहूर गिलानी साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो स्टेज पे आके प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब को मोमेंटो पेश करें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चूंकि ये मल कामयाब बनावनस मज एक सुंदर रोल आसान के बल्कि अत पत कन अत कामयाब तो कामरान बनावनस मज वारियाहन अफरादन हुंद रोल आसान कलीदी रोल आसान। चूंकि मुख्तलिफ कमेटी आई तश्कील दिन यमो मुख्तलिफ कमेटियन अंडर मुख्तलिफ अफरादों पन्ने पन्ने अनुमान हक लायक काम कर तो सुच नतीजे जी मल सपुद कामयाब तो सतन दोहन ये मल रूद युथ सक्सेसफुल युथ कामयाब जे ये रोज हमेशा अमिक यम साथ इस तवरीख जिक्र बरफ फर्क फिर नहीं ये जिक्र गैसे जरूर स्कोप की हिस्ट्री में इसकी बात जरूर आ जाएगी। उनकी मेहनत को सराहने के लिए मैं यहाँ पे दावत देना चाहूंगी मुख्तलिफ कमिटीज के चेयरपर्सन को। सबसे पहले प्रोफेसर जहूर अहमद गिलानी जो चेयरमैन थे प्रोग्राम एंड वेन्यू कमेटी के। मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगी ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा कि इनको मोमेंटो से नवाजा जाए। सर प्लीज। थैंक यू। प्रोफेसर जहूर अहमद गिलानी साहब जो चेयरमैन है प्रोग्राम एंड वेन्यू कमेटी। डॉक्टर जहूर गिलानी साहब। इसी कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर नुका राजू जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो स्टेज पे आके मोमेंटो लें अपना प्लीज। Big round of applause for Dr. Nuka Raju. Thank you so much. Now I would like to request Professor Fayaz Ahmad Nika Sahab, Chairman Budget and Expenditure Committee. He's not here. उनके बिहाफ पे हाँ अफजल साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उनके बिहाफ पे ये मोमेंटो ले आप।
Now I would like to call Dr. Irfan Alam, Organizer Secretary. बहुत बड़ा हाथ है इस मेले को कामयाब बनाने में इनका, so big round of applause please. Thank you. इसको मोमेंट को पेश किया जाए. शुक्रिया सर. अब मैं दावत देना चाहूंगी डॉक्टर आसिफ खान साहब को, जो चेयरमैन है हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल. थैंक यू सर. Now I would like to request Dr. Mohammad Shafi Khan साहब, जिनकी आज किताब यहाँ पे रिलीज हुई, वो स्टेज पे आके अपना मोमेंटो हासिल कर रहे हैं. So big round of applause. मैं दावा देना चाहूंगी प्रोफेसर वली मोहम्मद शाह साहब को, जो चेयरमैन थे प्रिंटिंग स्टेशनरी. आप उनसे मैं इस्तदा करना चाहूंगी कि वो स्टेज पे आके अपना मोमेंटो ले. आई डोंट थिंक यू. अच्छा ओके सॉरी. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. Now I would like to call Dr. Arif Nazir, जो इसी कमेटी यानी प्रिंटिंग स्टेशनरी साउनियर के कन्वीनर है. अब मैं उनसे इस्तदा करती हूँ कि वो स्टेज पे आके अपना मोमेंटो हासिल करें. आपको नाज़रीन ये भी बताते चले कि ये कन्वीनर थे फाइनेंस कमेटी के भी. सो डॉक्टर आरिफ नज़ीर. Now I would like to request Ehsan Chasti, Dr. Ehsan Chasti साहब, जो CM chairman थे technical and IT sport, to come on stage and please अपना moment to लें. Big round of applause please. मैं दावत देना चाहूंगी मिस्टर अर्शिद महराज को, जो कन्वीनर थे मीडिया एंड पीआर कमेटी. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अर्शिद महराज साहब. अब मैं दावा देना चाहूंगी मिस्टर फैजान मीर साहब को, जो कन्वीनर थे ट्रांसपोर्ट के. वो डेस्क पे, वो स्टेज पे तशरीफ लाके अपना मोमेंट छोड़े प्लीज. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज इट्स अ टीम वर्क. अब मैं दावा देना चाहूंगी डॉक्टर फिरदौस अहमद सोफाल को, जो कन्वीनर थे स्टेट्स के, वो तशरीफ लाए स्टेज पे और अपना मोमेंट चोले. मैं अब बुलाना चाहूंगी मिस्टर गुलाम नबी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेट्स, कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें. हाँ, उनके बिहाफ पे सादिक साहब ले रहे हैं उनका मोमेंटो. यस, थैंक यू सर. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अब्दुल रशीद, डिप्टी रजिस्ट्रार CUK एंड मेंबर सेक्रेटरी स्टीयरिंग कमेटी, की वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें. Big round of applause for all the members of the committee and the chairpersons. Thank you. Thank you. सर ना सब सुनेंगे सर. हाँ
Sir, एक मिनट. Obviously. Siti afutawi hararatu begatal shithomut shumalehu. Siti afutawi hararatu begatal shithomut shumalehu. Butakhayyulas man se wendiwan. So nonu ikunai chuk misalehu. अब मैं मरकजी जामिया कश्मीर के साबिक शेख जामिया माहिर कानून मारूफ दानिश्वर और इस तकरीब के सदर मोहतरम इज्जत माब प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर साहब से अदबन और एहतरामन इल्तिमास करती हूँ कि वो अपने सदारती किलमात से मजलिस को नवाजे. तो जोरदार तालियों के साथ उनका खैर मकदम किया जाए. जनाब मोहतरम प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोफेसर नजीर साहब who has left, the honorable vice chancellor of SCAST, जनाब मोहतरम प्रोफेसर अफजल जरगर साहब, वर्दी रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, हम वतन रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर. हाँ, हम वतन पता नहीं, हम अगर और लगाएंगे कितने हम लग जाएंगे, तो हम में तो बहुत रिसर्च. जनाब मोहतरम प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब और जो मेरे यहाँ सामने बैठे हैं हॉल में, इन सब को मैं अपने दिल की गहराइयों से पहले सलाम अर्ज करना चाहता हूँ. और आप सब शाहिद साहब के साथ साथ मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जिस तरीके से ये एक हफ्ता स्कोप का प्रोग्राम अंजाम दिया गया. मेरी कोशिश थी कि मैं भी कुछ सेशंस अटेंड कर लूं, लेकिन चूंकि मैं बाहर था और कुछ सिलेक्शन कमेटीज की वजह से नहीं अटेंड कर पाया, हालांकि दावत तो नहीं थी. लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे फीडबैक मिलता रहा किस वलवले से और किस तरीके से यहाँ पर कुछ टॉपिक्स का किस तरह प्रेजेंटेशन हुई. और मैं शाहिद साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है जिन्होंने यूट्यूब पर इसका जिन्होंने ये लेक्चर सुने, सब ने तारीफें की. और मैं खुद जब मैं यहाँ आ रहा था एक हमारे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, फैकल्टी हैं, नो डाउट ही इज यंग, लेकिन बालों से बहुत बूढ़े लग रहे हैं. एजाज साहब, इनके भी बाल सफेद हैं. जो इन्होंने अपना लेक्चर दिया उसमें इन्होंने एक सवाल रेज किया है, डोंट ट्राई टू इम्पोज, ट्राई टू आस्क. शायद यही कुछ ऐसा ही था माफूम कि हाँ, आस्क क्वेश्चंस. साइंस का जो बेसिक मकसद है, क्योंकि स्कोप का मकसद है कि साइंस को पॉपुलराइज करना लोकल लैंग्वेज में, जिसका फ्लैग हमारे शाहिद साहब ने ले लिया हाथ में और इंशाल्लाह बहुत ऊंचा है ये. और क्योंकि अभी तक ये उर्दू और कश्मीरी तक महदूद हैं यहाँ हमारे यूटी में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसमें पहाड़ी, गोजरी और डोगरी भी आ जाएगा. और मेरी कोशिश रहेगी, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि शाहिद साहब इसके एक नेशनल कोऑर्डिनेटर इंशाल्लाह बन जाएंगे ताकि हर एक लोकल लैंग्वेज जो है इसमें इंक्लूड हो जाए. वेल, मकसद क्या है इसका? जैसे कि अभी इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक खान साहब का, इन्होंने कुछ एनालाइज किया कॉस्मोलॉजी पर. और इसी तरह प्रोफेसर नजीर अहमद साहब ने, गनाई साहब ने, उन्होंने भी एनालाइज किया एडवेंट ऑफ जो इस तरह इंसान का वजूद आया. अफजल साहब ने भी कुछ फरमाया और निसार साहब ने भी. अगर आप कुरान और साइंस का मुताला कर ले, आप देखेंगे जो आज के इन्वेंशंस हैं, जो भी आज कुछ नई चीज दुनिया में आती हैं, उसका जिक्र हमारे कुरानी पाक में हुआ है और उसकी एनालिसिस हमारे हुजूरी पाक
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उनकी जो पेशन गोइयां, उनका जो साइंस का जो तर्जमा, साइंस के जो एनालिसिस, ये सब आज आपका इस वक्त मिल रहा है। आप इस फोन की बात कीजिए, हमारे कुरान में हमारे हुजूर ने फरमाया कि एक जमाना आएगा जब जिस्म के कुछ पार्ट्स भी बोलेंगे। और अब चूंकि जैसे अफजल साहब ने सही फरमाया और भी गनाई साहब ने, हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अनकरीब ही आप ये जो इंटरनेट और वाईफाई की बात कर रहे हैं इसको भूल जाएंगे और आपका ब्रेन नेट आने जा रहा है। ब्रेन नेट में भी आपका जिस तरह ये अपलोड एंड डाउनलोड की बात हम करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह पूरा मैकेनाइज हो जाएगा एक बंदा। और इसी तरह से जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो भी आपका कोई भी एक्टिविटी है लाइफ की, वो डिजिटल मीडियम में तब्दील हो रही है। इसका असर आपके हेल्थ पर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका असर आपके एजुकेशन पर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका असर आपके ज़हनी कुव्वत जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं इन द सेंस आप किस सेंस में इसको हासिल करना चाहते हैं। ये जो आज हम बच्चों को ये मोबाइल हाथ में देते हैं, अगर वो खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, इसके दोनों नताइज हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन हमें इसके साथ चलना है। अगर हम साइंस के साथ नहीं चलेंगे तो वजूद खतरे में हो सकता है, इंडिविजुअल का, कायनात का नहीं, इंडिविजुअल का वजूद खतरे में आ सकता है। आप एजुकेशन की बात कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कीजिए। अभी जो हमारे नए चेयरमैन आ गए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, उन्होंने पब्लिकली कहा, मेरा ख्वाब है चेयरमैन साहब का जो मौजूदा चेयरमैन है, कि मैं अब यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन देखना चाहता हूं। जब हम यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन की बात करेंगे तो मूक्स तो ऑलरेडी इन वोग है। जब हम यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन की बात करेंगे तो आप ये देखिए कितना रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा, और जो इसके साथ नहीं जुड़ेगा मेरे ख्याल में उसकी इफादियत, उसका वैल्यू सिस्टम में डिमिनिश हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम कोशिश करें, जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने भी कहा, कि हम साइंस को पॉपुलराइज कर लें, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करें। साइंटिफिक टेम्पर मुझ जैसे बूढ़ों में नहीं करना है, साइंटिफिक टेम्पर हमारे छोटे छोटे बच्चों में इनकल्केट करना है। ये बारिश क्यों पड़ी, बर्फ क्यों पड़ रही है, बर्फ क्यों कश्मीर में ही है, जम्मू में नहीं है। इनके जो हमारे क्वेश्चंस हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, इनको सीरियसली लेना है, इनको सीरियसली लेना है और कोशिश करनी है कि हम इनका साइंटिफिकली जवाब दे दें। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो खुदा की देन ही होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि खुदा ने बच्चा दे दिया। बात तो सही है, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस होता है, इसका कुछ साइंटिफिक प्रोसेस है जो बच्चे आजकल जानना चाहते हैं, जो आप बच्चों के सामने छुपा नहीं सकते। मेरी प्रॉब्लम है, जब भी मैं इस हाल में खड़ा हो जाता हूं और जब भी मैं अपने बच्चे या अपने कुलीग्स के सामने खड़ा हो जाता हूं, पता नहीं क्या बोलता हूं, लेकिन रुकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये एहसास है कि आपका लंच आपका वेट कर रहा है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कंक्लूड करना चाहूंगा। हमारे लिए खुशी की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिला है विज्ञान प्रसार से, जिसको हम स्कोप कहते हैं। इसका आगाज मेरे ख्याल में 3-4 महीने पहले हुआ और खुदा का शुक्र है फर्स्ट सिटिंग हमारी इसी हॉल में हुई, जिसमें तलत साहब भी उस वक्त मेरे ख्याल में मौजूद थे। और सेकंड सिटिंग जो आइडिया यहाँ फ्लोट हुआ, उस वक्त थे महदूद था और दूता थी, लेकिन उसी सिटिंग में फर्स्ट सिटिंग में आइडिया आ गया कि हम इसको कश्मीरी में भी इन्वॉल्व कर ले।
और सेकंड सिटिंग जो हमारी हुई वो अच्छी जगह पर शेखुल आलम के दरगाह चार शरीफ में हुई और वहाँ पर पूरे विज्ञान प्रसार के लोग आए थे, विज्ञान प्रसार के लोग आए थे और वहाँ पर इसका हमने MOU किया और मुझे बहुत फख्र है और खुशी भी है कि इसका आगाज जिस तरीके से हुआ उसी रफ्तार से ये इसका सहरा तो शाहिद साहब और इसकी टीम को जाता है कि उसी तरीके से ये आगे चल रहा है। और चूंकि आजकल के ज़माने में वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मुझे पूरा यकीन है शाहिद साहब इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के तो इंशाल्लाह अनकरीब ही आप देखेंगे हमारे कुछ जो साइंटिफिक इश्यूज हैं या जो साइंस की कुछ किताबें हैं उनका आप तर्जमा उर्दू में भी और कश्मीरी में भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के माध्यम से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के माध्यम से इंशाल्लाह अनकरीब हमारे हाथों में किताब होगी जो ट्रांसलेटेड होगी। मेरी एक गुजारिश थी इनसे और इस वक्त भी गुजारिश करूंगा शाहिद साहब से, हम थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको स्पोकन लैंग्वेज में इसको तर्जमा हो जाए इंशाल्लाह प्रिंट फॉर्म में और ऑडियो वीडियो में। जैसे कि हमारे यहाँ शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के जो शुर्क हैं, अगर आपको कश्मीरी समझ में भी नहीं आता है, अगर वो ऑडियो वीडियो आप 2 या 3 दफा रिपीट करके सुनेंगे ये आपके दिल में पेंट्रेट, दिमाग में, दिल में बहुत डीपली पेंट्रेट होता है। तो इसलिए इनका अगर ट्रांसलेशन हो जाए जो कि एक लेमेन्स लाइक मी उनके इट इज नॉट विद इन देयर कप ऑफ टी, मेरे ख्याल में हम उसमें भी साइंस है, कब की बात, उसमें भी पूरा साइंटिफिक टेम्पर है उनके जो उनका जो फरमाना था उस वक्त। तो इस्लाम इन इटसेल्फ इज अ साइंस। कुरान का जो भी एनालिसिस, हमारे एक फॉर्मर वाइस चांसलर थे, शाहिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उनके वो बुकलेट्स जो है उनने लिखी हैं जब वो यहाँ से फिर चले गए यूनाइटेड स्टेट्स, मरहूम शाह मंजूर आलम साहब, उनके बुकलेट्स हैं साइंस एंड इस्लाम। उसमें वो पूरा जो उन्होंने एनालाइज किया, बेसिकली ही वाज अ ज्योग्राफर, तो उसने बहुत से अर्थ साइंसेस के और भी फिजिकल साइंसेस के कुछ ट्रांसलेशन किए और उनको कनेक्ट किया है विद कुरानिक वर्सेस। मैं जनाब शाहिद साहब का, रजिस्ट्रार साहब, अफजल साहब का, वाइस चांसलर जिन्होंने कुछ वर्ड्स मेरे बारे में बताए, प्रोफेसर फारूक साहब का, निसार साहब का और आप सब हम वतनों का बहुत मशहूर हूँ कि आज हमें मौका मिला यहाँ पर शाहिद साहब ने दिया। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा जिंदगी रही फिर मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह, और मैं दो रहूंगा कि ये दिन ब दिन तरक्की करते जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। समखुन नसीब ٲسِن बूझन खुदाई बूझन, समखुन नसीब ٲسِن बूझन खुदाई बूझन, सोई बस वमीद अक्षम सुई एतबार वजद। इस इख्तितामी तकरीब के इख्तिताम पर मैं शोबे उर्दू मरकजी जामिया कश्मीर के उस्ताद, शोबे कश्मीरी के कोऑर्डिनेटर और इस मेले के मुअत्तमिर डॉक्टर इरफान आलम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस मेले की इब्तिदाई और इख्तितामी तकरीबात के हवाले से शुक्रिया की तहरीक पेश करें। लेकिन शुक्रिया की तहरीक पेश करने से पहले मैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो डॉक्टर इरफान आलम साहब की मेहनत को सराहने के लिए, जो उन्होंने मेहनत की है इस मेले को कामयाब बनाने में, उनको गुलदस्ते से नवाजा जाए, द टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब डॉक्टर इरफान आलम साहब से मैं इस्तदा करूंगी, अदबन इस्तदा करती हूँ कि वो डेस्क पे आके अपने शुक्रिया की तहरीक पेश करें। नहीं लगेगा, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहनशी पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ दानिशवरान, सफ़े सामीन की पुरकश कहकशां, मुंतज़मीन मेला, बहसियत
मोतमिद मेला, मैं यहाँ अपना फर्ज मनसबी समझता हूँ कि इस मेले के हवाले से हर शख्स के यादगारी लम्हात जो इस हफ्ता तवील साइंस मेला से जुड़े हैं उन्हें तस्बीह के दानों में फेरने की कोशिश करूँ। बहरकैफ कमाले ज़ब्त को मैं खुद भी आजमाऊंगा। इस इख्तामी निशस्त को रौनक बख्शने के लिए मैं शहनशीन पे तशरीफ फरमा दानिशवरान, जिनमें प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर साहब, साबिका शेखुल जामिया मरकजी जामिया कश्मीर गांधरबल। यूनिवर्सिटी ममनून है कि आपने इस निशस्त में अपने सदारती कलमात से हमें नवाजा और तालिब इल्मों, मुहक्किकीन नीज़ असातिज़ा के लिए साइंसी उलूम के हवाले से नए दरवा किए। शुक्रिया सर। मारूफ दानिश्वर माहिर मालियात प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, शेखुल जामिया मरकजी जामिया कश्मीर गांधरबल, आपने अपने खुसूसी कलमात से हमारे दिलों में एक बार फिर वलवला पैदा किया। हम आपके ममनून मशकूर हैं। ज़राई साइंस के मारूफ दानिश्वर और साइंसदान प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब, शेखुल जामिया शेर कश्मीर ज़राई दानिशगाह बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शालीमार, आपने इख्तितामी कलिमात मरहमत फरमाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हैवी हयातियात के दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब, रजिस्ट्रार मरकजी जामिया कश्मीर गांधरबल, आपने अपनी मुशफिकाना इंतजामी सलाहियतों से मरकजी जामिया को सितारों से आगे पहुंचाने के मुतअद्दिद काम में मुनमहिक हैं। आपके बसीरत अफरोज और पुरमगज कलिमात ने हमें एक नई राह की ओर गामजन किया। आपका दिल से शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब, रजिस्ट्रार जामिया कश्मीर श्रीनगर, आप हमेशा की तरह हमें दिल में जगह देते रहे हैं और इस मेले में भी मुसलसल आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है। हम आपकी मोहब्बतों और माने कुन कलमात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफीक खान साहब, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सिंबल बांडीपुरा, जिनकी किताब की यहाँ रस्म रनुमाई हुई, उम्मीद है कि आपकी ये तसनीफ नए कलामिया की बुनियाद रखेगी। आपका शुक्रिया जनाब। और इस मजलिस के रूई रवां, बल्कि मैं कश्मीरी में इज़्मन कहूँगा, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, हम आपकी इस पुरखुलूस मोहब्बत के मोतरफ हैं और हम दिल की उम्मीद गहराइयों से आपके काम का शुक्रिया अहमद फराज के इस शेर से अदा करते हैं। रुके तो गर्दिशें इसका तवाफ करती हैं, चले तो इसको जमाने ठहर के देखते हैं। मैं यहाँ खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब का, प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब का, प्रोफेसर सोहाब साहब यहाँ मौजूद नहीं है उनका, प्रोफेसर फयाज अहमद निका साहब का, प्रोफेसर वली मोहम्मद शाह साहब का, प्रोफेसर फारूक अहमद मीर साहब का, प्रोफेसर अजरा कामली साहबा का, वो अभी यहाँ से चली गई, नासिर मिर्जा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर सलीमा जान साहबा यहाँ पर मौजूद थे भी। आप सबका शुक्रिया। मैं यहाँ पर तमाम मकाला निगार, सदूर साहिबान, मुकर्रीन, शायरों, फनकारों, बांड पत्र, सिकिट, कठपुतली, गीतकारों, मौसीकी जिन्होंने तरकीब दी, मंदोबीन का, हर एक मंदोबीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर जनाब जावेद अहमद साहब का, जिन्होंने AICTE की तरफ से यहाँ अपना स्टॉल लगाया था। मैं यहाँ पर मौजूद कश्मीर यूनिवर्सिटी निजामत कॉलेज कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले नीज बराह रास्त सबके लिए स्कोप मेला के खुतबे से जुड़े हुए तालिब इल्म और मुहक्किकीन का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इल्मी मजलिस में हिस्सा लिया। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सदर शोबा इल्मुल हैवान और जामिया कश्मीर, सदर शोबा इल्म नबातात जामिया कश्मीर, नाजिम मरकज बराए वस्ती एशियाई मुताला जामिया कश्मीर और नाजिम इंजीनियरिंग कॉलेज ज़ुकुरा जामिया कश्मीर, जिन्होंने इस मेले के लिए अपने इदारों के अजायब खाने और नबाताती बाग की खिदमत बहम रखी, लेकिन मौसमी हालात और वक्त की तंग दामनी के बायस हम उनसे मुस्तफीद न हो। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर एहसान रहीम मलिक, डॉक्टर नुसरत जबीन, डॉक्टर परवेज अहमद आजमी, डॉक्टर राशिद अजीज, डॉक्टर जफर अब्दुल्ला, डॉक्टर कैसर उल हक, जनाब असरार जावेद, डॉक्टर समरीना गिलानी, जनाब एजाज आरपी, जनाब मोहम्मद यूनुस, जनाब जाकिर अहमद, जनाब आशिक अहमद, जनाब अंजर नबी, जनाब फेरोज अहमद, डॉक्टर अफशाना, मोहतरमा अस्मा रहमान, असमत रहमान, जनाब नजीर अहमद। आपने
मुख्तलिफ नशस्तों की निजामत, मुशावरत और रिपोर्टिंग कश्मीरी और उर्दू अंग्रेजी जुबानों में बड़े एहतमाम के साथ की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नाजिम कॉलेज कश्मीर डॉक्टर यास्मीन अशाई साहिबा का कि उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजों से वाबस्ता असातिज़ा को इस मेले में भेजकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मेले की इंतजामी कमेटियों का, मरकजी जामिया के मालियाती उमूर के सरबराह, हमारे मालियात और तिजारती इंतजामिया के उस्ताद प्रोफेसर फयाज अहमद निक्का साहब और उनकी कमेटी का, जिनमें डॉक्टर आफाक आलम साहब, डॉक्टर आरिफ नजीर, डॉक्टर आबिद मिराज, सुहेल गनी के साथ साथ डॉक्टर आसिफ अली खान, डॉक्टर आबिद हमीद, डॉक्टर तारिक अहमद शाह, मोहतरमा हुमा आहनगर, जनाब मीर नवीद और जनाब अब्दुल रशीद साहब और आसिफ अहमद का, जिन्होंने मेहमानों की तवाज़ा में कश्मीरी मेहमान नवाजी की याद ताज़ा करते हुए इसमें एक नई रूह फूंकी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीन बराए तालीम और सदर शुबा तालीम मरकज़ी जामिया कश्मीर प्रोफेसर ज़हूर अहमद गिलानी साहब और उनकी कमेटी का, जिनमें डॉक्टर नक्कू राजू साहब, डॉक्टर गौहर साहब, इंजीनियर इरफान, डॉक्टर अली मोहम्मद डार, डॉक्टर समरीना गिलानी, डॉक्टर इम्तियाज अहमद शामिल हैं, जिन्होंने मसाबत को यकीनी बनाने में अपने तजुर्बात को सही ठहराया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रियाजी के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर वली मोहम्मद शाह साहब और उनसे वाबस्ता कमेटी का, जिनमें आरिफ नजर, जनाब आफाक आलम खान, जनाब आदिल इंद्राबी, जनाब इमरान बासु का, जिन्होंने तिबात और इशात को बर वक्त मुमकिन बनाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बरादर असगर और सदर शोबे सयाहत मरकज़ी जामिया कश्मीर डॉक्टर फैजान अशरफ साहब का और उनकी कमेटी का, खुसूसन जनाब एजाज साहब का, जनाब गौहर साहब का और जनाब जमीर साहब का, कि जिन्होंने सफर और दीगर लवाजमात को बखूबी अंजाम दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबा इतलाती टेक्नोलॉजी के नाजिम डॉक्टर मोहम्मद एहसान चश्ती और उनकी टीम, खुसूसन जनाब इंजीनियर इरफान के साथ साथ जनाब माजिद नजीर और उनके मुआविनीन जनाब रईस अहमद और गजनफर यूसुफ का, जिन्होंने इतलात और नशरियात को बखूबी अंजाम दिया। मैं दिल की गहराइयों से अपने हमदम दीरीना डॉक्टर फिरदौस अहमद सोफा साहब और उनकी कमेटी, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल के प्रोफेसर बराए स्टेट जनाब इम्तियाज साहब, जिन्होंने यहाँ पर बुनियादी सहूलियात को बहम पहुंचाई। यहाँ पर मैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब का शुक्रिया एक बार फिर अदा करना अपना फर्ज मनसिब समझता हूँ कि आपके लिए सर मैं शेर कहना चाहता हूँ, तमहीदन शेर बांधना चाहता हूँ। इश्क है सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाई खाम खूने जिगर के बगैर। यहाँ पर प्रोफेसर शाहिद रसूल के साथ उनके पूरे शोबे डॉक्टर आरिफ साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, डॉक्टर नक्कू राजू साहब, डॉक्टर जान बाबू साहब के साथ साथ जनाब समीर साहब, सुको प्रोजेक्ट से जुड़े जनाब जुबैर अहमद खांबे और जनाब इनायत अहमद चंगा, मीडिया इंस्टीट्यूट के तमाम तलबा और स्कॉलर्स। यहाँ पर मैं शोबा कश्मीरी के तदरीसी अमले डॉक्टर अली मोहम्मद डार, डॉक्टर समरीना गिलानी और इम्तियाज अहमद डार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबके लिए स्कोप मेला को मुनक़िद कराने में और इसकी खुश उसलूबी से मावनत के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल, कश्मीर यूनिवर्सिटी हजरतबल श्रीनगर की इंतजामिया, खुसूसन शेखुल जामिया आली जनाब प्रोफेसर तलत अहमद साहब, रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद साहब, नाजिम तहकीकी मरकज बराए तालीमी कसीर इबलाग EMRC जामिया कश्मीर सलीमा प्रोफेसर सलीमा जान साहिबा के साथ साथ उनके तदरीसी और गैर तदरीसी अमले, जिनमें जनाब अब्दुल्ला खावर साहब, जनाब शफकत हबीब साहब, जनाब जलालुद्दीन बाबा साहब और जनाब इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब। आपने पूरे हफ्ते जिस तरह अपनी दस्तावेजी फिल्में साइंस मेले में पेश की, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब का और पूरी प्रोक्टोरियल विंग का, कि आपने पूरे साइंस मेले को हिफाजत इंतजामात में किस तरह की किसी भी तरह की कमी न रहने दी। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुंतजमीन गांधी भवन का, मुंतजमीन इतलाती टेक्नोलॉजी खुसूसन मारूफ अहमद कादरी साहब का और कश्मीर यूनिवर्सिटी की स्टेट्स की इंतजामिया, और हम आप सबके ममनून मशकूर हैं। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम बरकी और प्रिंट मीडिया का, जिन्होंने मुकम्मल 7 दिन तक इस सब के लिए स्कोप मेला के नशर तशरीर को मुमकिन बनाया, खुसूसन PRO जनाब अरशद महराज साहब का, जिन्होंने अमली तौर पर इस मेले की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश की। मैं पूरे हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाले सब के लिए स्कोप मेले की 75 जगहों में दिल्ली से विज्ञान प्रसार की पूरी टीम, जिनमें खुसूसियत के साथ डॉक्टर नकुल पराशर साहब, डॉक्टर कुनकुनी मिश्रा साहिबा, डॉक्टर निमेश कपूर साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल, कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले, नीज रास्त और बराह रास्त सबके लिए स्कोप मेले के हफ्ता
तवील सिलसिले से जुड़े हुए तालिब इल्म और मुहक्किकीन और मंदोबीन का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इल्मी मजलिस में हिस्सा लिया। हाज़रीन से इस्तदा है कि वो ज़ोहराना में शिरकत फरमाएं। इस यादगार इल्मी व साइंसी तकरीब के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। इससे पहले कि हम यहाँ से उठें और ज़ोहराना में शिरकत करें, मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि इस तकरीब की जो मेज़बानी अंजाम दी गई बहुत ही खूबसूरती के साथ, जिस इंसान ने हमें पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे में बहुत ही खुश उसलूबी के साथ यहाँ पर मेज़बानी के जो फ़राइज़ अंजाम दिए, मेरा मतलब समरीन गिलानी जी से है कि उनको एक हम गुलदस्ता पेश करें। प्रोफेसर शाह साहब। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अच्छा